अली मेरी दुआ, या अली मेरी दुआ, या अली मेरी दुआ, या अली मेरी बंदगी मौला, या अली मेरी दुआ, या अली मेरी दुआ। या अली मेरी दुआ, या अली मेरी बंदगी मौला, या अली मेरी दुआ, या अली मेरी बंदगी मौला। हैदरी बनकर रहूं मैं, हैदरी बनकर रहूं मैं, जब तलक है जिंदगी मौला। या अली मेरी दुआ, या अली मेरी दुआ। हक अली है पाक अली, मज़हरे परवरदिगार मौला। हक अली है पाक अली, मज़हरे परवरदिगार मौला। तू बिना इला इलाहा, तू बिना इला इलाहा, नूर पंजतन या अली मौला। या अली मेरी दुआ, या अली मेरी दुआ। नाम लेवा है तुम्हारे, है मेरे प्यारे अली मौला। नाम लेवा है तुम्हारे, है मेरे प्यारे अली मौला। लाज रख लेना जहाँ में, लाज रख लेना जहाँ में, मेरा अपना कोई नहीं मौला। या अली मेरी दुआ, या अली मेरी दुआ। हर दर्द की इसमें शिफा है, पढ़ ले तू नादे अली मौला। हर दर्द की इसमें शिफा है, पढ़ ले तू नादे अली मौला। दरिया है गम पार कर ले, दरिया है गम पार कर ले, लेता जाना में अली मौला। या अली मेरी दुआ, या अली मेरी दुआ। थाम लेता है सभी को, अपने हो या गैर हो मौला। थाम लेता है सभी को, अपने हो या गैर हो मौला। सबका है मुश्किल कुशा, सबका है मुश्किल कुशा मौला मेरा। या अली मौला, या अली मेरा।
सज गई खुशियों से मेरी सारी ये जिंदगी मौला सज गई खुशियों से मेरी सारी ये जिंदगी मौला हामियो नासिर मेरा है हामियो नासिर मेरा है शेर खुदा मौला अली मौला या अली मेरी दुआ 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 या अली मेरी बंदगी मौला या अली मेरी दुआ या अली मेरी दुआ Subscribe to SR Media Group official channel and stay updated. Hello. Yes, I am back. Yes, my name is Jalal from 𝗃𝗶𝘀𝗲 only on Punjabi National TV. इस बार मेरे गेस्ट होंगे आदित्य चौधरी. यस, वही आदित्य चौधरी जो बहुत मस्ती करता है और बहुत ही प्यारा गाता है. देखना मत भूलिएगा, ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टीवी. शुक्रिया. Here is the hottest show in town. You are tuned into Coffee with Jalal. सलाम नमस्ते सत आदाब याली मदद. मैं आपका होस्ट जलाल आपकी खिदमत में हाजिर. आप सब देख रहे हैं कॉफी जलाल ऑन रेडियो सोर्सिंग में ख्याल इन पंजाबी नेशनल टीवी. अगर आप if you're watching on फेसबुक और यूट्यूब guys, so thank you so much for joining us on Sunday edition of Coffee Jalal right here right now on Facebook and YouTube. Thanks again everyone for joining us. It's 1:14 अभी कैलगरी के दोपहर हुई है. It's like afternoon Calgary. अगर आप ईस्टर्न जोन में है 3:14 because one of our guests he's from eastern zone. अगर आप पाकिस्तान में हैं so it's about 12:14 early morning Monday early morning. अगर आप इंडिया से देख रहे हैं, हमारे गुड फ्रेंड तपस जी देख रहे हैं इंडिया से, so it's like 12:45 in India early morning. That's Monday early morning. And of course if you are in a Pacific zone it's like 12:14 afternoon, and if you are in Pacific zone 2:14. So I hope I जो है covered all the time zone. कैसा आप सब लोग ठीक है? Hopefully आपका I would say after winter early summer जो है दिन अच्छा जा रहा होगा. अगर आपने शेयर नहीं किया so please do so. You can share in your group on जो है Facebook पर, YouTube पर, कहीं भी आप जो शेयर कर सकते हैं WhatsApp group, so we can get as many people we can. इसलिए कि आज के जो दो guests हैं, they are brothers from a different mother. Yes, they are brothers from a different mother, but they were on my show last year sometime. It was during the pandemic. Well, we still have a pandemic. Lekin I think it was one of the great show we had. A lot of people asked me to bring them back together again. So here they are waiting backstage right now. तो जो है recently आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो है अपना of course I know जो you guys are tired of जो है talking about the COVID, but this is the reality, guys. जो है COVID-19 hit very hard, especially in India and Pakistan. I think mostly in India because we see a lot of pictures जो it doesn't look good, अच्छा नहीं लगता है कि हमारे जो है भाई बहन जो है इंडिया में जो इस हालत में. तो हम दुआ करते हैं हम सब, हमारे देखने वाले, सुनने वाले और पूरी जो है our team, सलाम नमस्ते कैलगरी रेडियो सोर्सिंग पंजाबी नेशनल टीवी, एंड ऑफ कोर्स ये जो है जो हमारे जो कॉफी विद जलाल की जो टीम, हम दुआ करते हैं कि उन सब की मुश्किल आसान हो. तो दिस ट्यूसडे व्हेन वी हैव अवर सलाम नमस्ते कैलगरी, वी गोना हैव अ लाइव from India, one of the journalists from India, from Mumbai, and he will join us and we'll get kind of the live update from him
कि वहाँ पे सिचुएशन जो है कैसी है, because if I remember if I go back 2-3 weeks everything was just fine. It just जो है recently I think जो one of the variant double muted, and I think this is the one is जो है causing a lot of problems. So hopefully we'll get जो है live update. अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, यूएस में कहीं भी है, pandemic still going on, guys. So please do take care of yourself and your family. We are not out of it yet. Inshallah soon. I know vaccinations are here. So inshallah soon we'll be out of this pandemic, and then we can get to our normal life. ये जो आज शाम को like again जो है after जो है हमारे दो like our जो है हमारे first guest, we're gonna have a NUR से Roshan team. They are about 8-9 artists from all over the world, from Pakistan, Africa, US, Canada. They'll join us. And और फिर शाम को 6 बजे Calgary time 8 o'clock Eastern we're gonna have a new episode of 𝗃𝗶𝘀𝗶 with Jalal, और मेरे साथ होंगे Aditya Chaudhary this time. Hopefully you guys will join us, and that will be live right here as well on my Koffee Jalal page, on my personal ID, as well as the Diamond Jubilee group. Okay, I think it's all done. Okay, let me get to my guests. They are waiting backstage. You know them, you love them. One of them looks very sleepy. Let me find out. Assalamu alaikum, Faisal bhai. सलाम अलैकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? बस ठीक है, आप कैसे हो यार? ठीक हो? बहुत जबरदस्त। सबसे पहले तो सबको बहुत रमजान मुबारक, एंड आई होप एवरीबॉडी फास्ट आर गोइंग गुड। Yes. और आपने सही कहा कि जैसे कि हालात चल रहे हैं, आई थिंक वी ऑल शुड प्रे दैट थिंग्स गेट बेटर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया, थिंग्स आर रियली क्वाइट अलार्मिंग राइट नाउ। सो हमारी दुआएं सबके साथ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम जो दुआई कर सकते थे, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए यहाँ भी हालत अच्छी नहीं है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। एंड अगेन जो है रमजान मुबारक जी। आपको भी और आपकी फैमिली को, फैसल भाई। सो लेट मी गेट टू योर अदर ब्रदर फ्रॉम अ डिफरेंट मदर, सुलेमान भाई, एंड वी कैन नॉट सी हिम। सुलेमान भाई, आपका लगता है कैमरा ऑफ है। Suleman, bhai, he's frozen right now. I think his Backstage. connection is having a little bit of a trouble. Yeah. So so by the time he'll join us, let me just get him. I think, yeah, Suleman bhai, if you can join us again. तो अपना फैसल भाई, सबसे पहले आपको और आपकी फैमिली को रमजान मुबारक। तो कैसा जा रहा है फिलहाल आपका रमजान, अपना रमजान का महीना? आई थिंक रमजान आसान जा रहा है, क्योंकि वैसे ही घर में ही रहना है, ज्यादा बाहर निकलना नहीं है, और weather भी is not bad, so I think for us it's pretty straightforward, pretty simple, but definitely Yeah. people back home, the weather is pretty hot over there, and also going through all the other stress, so I think definitely it's pretty harsh on them, but again, यहाँ पे हमारी तो बहुत सुकून है, अल्लाह का करम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे बहुत से लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, इंडिया से भी देख रहे हैं। लेट मी जस्ट पुट सम मैसेजेस हियर बिफोर वी गेट आवर गुड फ्रेंड या सुलेमान। हमारे जो है तपस भाई हैं, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया से, दिल्ली से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। सलीम पुंजानी, ही इज फ्रॉम कैलगरी, ही इज वेटिंग एज वेल। लैला आशम from Calgary, from Pakistan, sorry. Imran Budwani, hello Imran bhai, thank you so much for joining us. And now we have Suleman bhai as well. Yali Madad sir ji. You can see me? I can Hey see Suleman, you. yes brother, we can see you. Awesome. Always awesome Yeah, to see you. Same here. Thank you so much. Ramzan Mubarak to everyone, and I hope things are going well. And he's frozen again. Suleman bhai, maybe you want to use a different phone or something? Yeah, I think his connection is Yeah, because most of the, I think, unstable. Pakistan में, I know, yeah, वो ऐसा ही होता है. But hopefully he can use the other phone or something. So yeah, Faisal bhai, I think we talked last time. I think it was early pandemic, I should say. जब भी हमने start किया आपसे बात हुई थी. Then you got a lot of, then you got busy because you had your own positive lounge. Of course, we'll talk about that, that as well. तो since last year, जी। आपने क्या changes आए, क्या आपने नया सीखा, क्या वही पुरानी हरकतें हो रही हैं आपकी, क्या हो रहा है? नहीं, आई थिंक इट्स कोविड पीरियड ने और इस लॉकडाउन पीरियड ने बहुत कुछ सीखने पे मजबूर भी किया, कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटीज भी दी, और इसी Yeah. दौरान में हमने नए वेन्यूज को भी एक्सप्लोर किया।
तो जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूजिक साइड पे जलाल भाई, I was quite active, actually Yes. I was the one who first initiated last March when I started this online mushaira thing, Yeah. that was the first show, and then I brought a couple of friends, and somehow, we got into that. We created this positive vibes group in Facebook, and then so much love Yeah. came from all over the world. So Yeah. basically, I think it was a great journey, and we learned so much, how to bring people together, no matter what the situations are, no matter what the things are. Because again, I think the only thing which can keep us alive and keep us going is the hope. कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, Yes. और Yes. अल्लाह की जात से हम सबको उम्मीद है कि जो भी है उसी का दिया हुआ है, वही उसको खत्म भी करेगा. So definitely people are suffering. They are going through lot of issues, but at the end of the day, this thing is going to be over. कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद एक जबरदस्त उजाला होता है. तो इंशाल्लाह जी हम जी भी उस जी. तरफ जा रहे हैं. तो और एक बात फिर Yeah. सलमान That's हमारे साथ है. हाय मामू. yeah. That's Yeah, अरे मामू internet and आपके me. Me and internet. पता नहीं, इसको देख के मुझे कोई और वर्ड कहता है कि हम लोग का एक कितना पुराना याराना है और इतनी पुरानी दोस्ती है कि अगर जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो एक अलग सी कहानी होती है. तो जलाल भी आप दरमियान आप समझ रहे होंगे. जी जी जी. Hello, Nisha Devani. Thank you so much. Sonia, ZK, all your friends, all your fans. Anar Lada, thank you so much, everyone. They are joining us. Thank Hello, you. Salim Ali as well. तो अपने सुलेमान भाई आपसे जो है Yep. हफ्ते 10 दिन से बात नहीं हुई आपसे. मैंने अफवाह सुनी थी कि सुलेमान भाई को कॉफी जलाल शो पे आना है, तो वो अपने मेकअप में लगे हुए. इज दैट ट्रू? नहीं, वो बस तो कहते हैं ना, वो गोशाए तन्हाई में मजा आ रहा है. तो वैसे ही. सुलेमान भाई, you are frozen, my friend, again. नहीं, सुलेमान हमेशा से गोशाए तन्हाई ढूंढता भी था. I और I know. think that's his zone, where he really gets creative and brings a lot of exciting stuff. तो मुझे याद है जब मैं और सलमान हम लोग साथ परफॉर्म किया करते थे. Actually, I still remember the first time I met him. It was in हाँ Oklahoma, USA, and हाँ I was a student over there in the university, and Sulman was coming there to perform with his हाँ. complete band. So I still remember all those days, and that's the first time I met him. And then when I moved to Dallas, then we got to know each other, and honestly, we really became very close friends when we met here in Toronto. So अच्छा. again, I think हमारी जर्नी खासी पुरानी है और खासी जबरदस्त है. We have beautiful memories. Yeah, yeah. Okay, my sister is watching from Pakistan, Pakistan as well. Hello, Nosha. Thank you so much. Looks really nice. Thank you, Nisha and everyone. So Faisal bhai, I think पूरा साल हो गया pandemic में. Now the world is online right now. Sorry, they are जो है logging on YouTube, Facebook, जी. Instagram each and every day. तो आपने कुछ change किया है, like the way you present yourself? Because I know like you have to keep changing something to bring in, to kind of bring something new. Ji, Jalal bhai, again, if you follow, if I'm sure you're following it and you have seen all the videos in last year or so, I've produced more than 13 individual videos, and then I launched this Positive Vibes Lounge Season 1, which was again collaboration of 7 artists and Yeah, 6 songs in 5 different languages. So that was like a very major initiative, and we got so much coverage for that. We passed more than I will say 1.2 million viewership on that one. So I think yeah, altogether we got quite some exciting stuff. But on the other side, आपको ये भी पता है कि music is not my only thing. I have my own IT consulting company, and I start focusing on that because the whole world has changed. The way we used to do the consulting services, IT services, staffing, training, everything has changed. जो मेरा अपना IT training center है यहाँ Mississauga में, we have that huge place, but nobody is there, right? Because all the classes are online. So we had to learn how to adapt to this new mentality where literally no contact is the new norm. And basically you gotta convey your message. कहते हैं ना, वो पहले होता था कि एलिवेटर की 30 seconds की तो आपकी स्पीच होती थी, that's make it or break it. Now that whole जी, notion is gone, right? You have to come up with yeah, the new ideas. So I think yes, उसके लिहाज से बहुत सारी चेंजेस की, अगेन ऊपर वाले का करम है कि उसने
हमारी कंपनी मेरी कंपनी को भी माशाल्लाह like we've been growing amazing in this period and Yeah. definitely we I think again अगर अपना focus रखें and stay positive. I know sometimes it's very easy to say and hard to do, but at the end of the day positivity is the only thing which can keep us going. Yeah. Yeah. I don't know, negativity, yes, I know it's there, it's out there. We cannot avoid it. We cannot completely vanish that. But the thing is, उसके ऊपर focus करने से फायदा नहीं है. कहते हैं ना, what you नहीं. think, what you get. Yeah, yeah, that's right. Yeah, so I think ये बहुत जरूरी है to stay positive and अपना there are आपको जो है negativity आती है but you can take it on a positive way and then you can try to come up or as like in a positive. इसलिए मेरी जब भी बात हो रही थी one of our जो है जगजीत साहब के जो है शागिर्द उनका जी. अख्तर क्या नाम है ये अपना जो है तौसीफ अख्तर मेरी जब भी उनसे बात हो रही थी when he was on the show and he said yeah there are so many जी. things are going around you lekin be positive and you try to build your own quality. I think that will help you, that will go a long way. Hello Suleman bhai, welcome back. And एक बार फिर. Oh my god, he's having issue today man. Normally ऐसा इतना खराब नहीं होता है ये. Seems like Here it. we go. Yeah. Yeah. जी इतना सुलेमान भाई. नहीं होता है. Yeah. इतना नहीं होता है. We can talk in audio. I mean, that's fine. I should be okay. No, but जी I जी. mean, like Faisal was saying, pandemic time is a little different, and we learned a lot of stuff. And I believe we all are learning. I mean, and we should be like focused on our things, and it's time to get together. What we have lost all these years, we have forgotten. Yeah. So true, so सुलेमान भाई true. आपकी आवाज नहीं आ रही है यार. नहीं सुलेमान भाई आपकी आवाज भी नहीं आ रही है हमें. Oh god. It was working fine earlier. जी. ओके. ना पैंडेमिक की वजह से हमारे इंटरनेट कनेक्शंस पे भी बड़ा जोर पड़ा है ना. तो आई Yeah. थिंक दैट्स हाउ इट इज. सो उसका क्या किया जा सकता. लेकिन अगेन वो जो हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं ना, ये समटाइम क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार मैं लाइक व्हाई एम आई फेकिंग दिस पॉजिटिविटी, आई एम नॉट पॉजिटिव. बट वो कहते हैं ना, आपकी किसी फेकनेस से हो सकता है आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि यार नहीं पॉजिटिव रहो, एनर्जी लेकर आओ, उसकी वजह से किसी और पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़े. तो कहते हैं ना कि वो एक दूसरे से दूसरे को राह मिलती है. तो उस तरह से हमें करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम नेगेटिविटी से अवॉइड करें और पॉजिटिविटी की तरफ देखें और कोशिश करें. बिकॉज मैंने उस एक किताब पढ़ी है साइबरनेटिक्स पे, और उसमें यही है कि व्हाट योर सबकॉन्शियस माइंड इज थिंकिंग. जो आप सोच रहे थे वो आपके कॉन्शियस माइंड में जाता है, एंड दैट्स हाउ यू रिएक्ट. सो yeah. ओके तो जो है फैसल भाई आपका जो पॉजिटिव लॉन्च जो वाइब जब भी आपने लॉन्च किया लास्ट ईयर. जी. So let's talk about that. So how was your experience? Oh, it was phenomenal. It was phenomenal experience right from the inception all the way to execution. I will say that was my lifetime. I will say maybe I will say achievement in this pandemic period when things were not available, when people were like so scared, and me and my whole team, we were really brave enough to went on this path and brought all these Yeah. people together. वो जो कहते हैं ना कि वो कोई चीज भी जो प्रोड्यूस होती है, जो एक अच्छी चीज प्रोड्यूस होती है ना, वो एक टीम वर्क से होती है. जो जी. पॉजिटिव वाइब की लाउंज के अंदर सिनर्जी थी. अगेन जिन लोगों ने नहीं देखा है, please search Positive Vibes Lounge season 1 on Facebook or on YouTube. You can even go to Positive Vibes group and you can find all the songs over there. And I'm sure Jalal भाई आपको एक दो गाना प्ले भी कर ही देंगे. तो उसके अंदर हमने 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर 7 आर्टिस्टों को मिलाकर 6 गाने हमने प्रोड्यूस किए थे. And trust me, we were so scared. A day before, couple of days before our shoot, Toronto again went in the lockdown state. Everything was shut down. That. And we had paid deposit for the studio and everything, and I was scared that what's going to happen. And then कहते हैं ना, जब चीजें होनी होती है तो हो जाती है. मैंने स्टूडियो को कॉल की तो उसने कहा कि नहीं, we are production facility and we are essential services, so we are open but we still have a limited capacity, so be careful. So we went over there, we tried to cramp everything in just a couple of days and did everything.
And I think that paid off. The way it came out, the love and support and appreciation we got was just phenomenal. And all the artists were amazing. The song Yeah, yeah, selection, yeah. everything was beautiful. Yeah. So how much difficult was it to produce this kind of thing? If you can share some maybe stories if you have. it was quite difficult because see, first of all, पहले तो ये होता था ना, आप आ गए स्टूडियो बैठ गए अपने आराम से, आपने brainstorming की, came up with couple of songs. But this one, we were also trying to bring multiple language. We had Tamil, we had Bengali, we had Gujarati, we Yeah, had Punjabi, we have English, right? So yeah. सबको मिलाकर चलना, पर मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं तमिल में भी गाऊं, बंगाली में नहीं, Right. बंगाली में तो मैंने नहीं गाया था, लेकिन गुजराती में मैंने गाया था. So I think that was a little bit tricky, but on the same page, I think it was an amazing experience. And जैसा कि आपने कहा ना कि process जो था वो, even though it was very straightforward, but it still took many days, for one song Yeah, to finalize and to record and to produce. It wasn't that straightforward thing, and especially if you yeah, look at the quality of that, Jalal bhai, I think the one thing which I focused big time. I said, yeah, what? One thing which we have to differentiate is the quality. अभी yeah, आजकल आप देखें बहुत सारे shows हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं. People come, they pick up, phone and start recording. It is good. But the thing is, how you differentiate yourself is through your quality and the way you execute it. So I yeah, think yeah. that's how we did differently. So yeah, so let me ask you this. जब भी आप because of course you did song by song. तो कभी ऐसा हुआ कि you recorded the whole song, then you said नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था. Why don't we do this way? Did you change anything on the go? Honestly, हुआ दो तीन दफा ऐसा लगा कि यार ये गाना जेल नहीं करता, या ये गाने Hmm. में वो फील नहीं आ रही. लेकिन वो कहते हैं ना, जब जब अच्छे दिमाग बैठते हैं. आई स्टिल एडमायर माय म्यूजिक प्रोड्यूसर, शोएब फर्रो. अमेजिंग क्रिएटिव पर्सन. जहां पे मुझे लगा ना कि यार इस गाने के अंदर फील थोड़ी कम हो रही है, उसने कुछ इस तरह का जादू किया, इस तरह से गाने को लेकर आया कि उस गाने में एक जान पड़ गई. तो कहते हैं Yeah, ना, yeah, perfection is good to uh, you know like go for, but it's not always the final product. क्योंकि yeah, आज जो yeah, yeah. परफेक्ट है वो कल परफेक्ट नहीं होगा, कि नहीं राइट? होएगा तो यार, सही आप बात है. कोशिश Yeah, करें अच्छे करने की, लेकिन डोंट स्टक ऑन वन थिंग कि यार ये सही नहीं हुआ. नहीं नहीं, मेरा ये हमेशा ऑब्जेक्टिव है कि हमेशा इंप्रूवमेंट हो सकती है. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट शुड ऑलवेज बी देयर. आप करो, अच्छा करो, दिल से करो, प्रोड्यूस करो, एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट लेवल. then move on. Yeah, move on. Yeah, सही बात है, सही बात है. Suleman bhai, welcome back. And he's frozen again. Oh my God, इतना इतना बुरा तो नहीं होता कभी सुलेमान भाई का. आज क्या हो गया यार? मे बी सुलेमान, आप ऑडियो पर आ जाओ यार. ऑडियो पर आ जाओगे ना तो शायद बेहतर हो जाए. Yeah, yeah, but I won't be able to connect on audio. I don't know. Oh my God. So Varun, okay. So अपना फैसल भाई जो कौन सा गाना आपका प्ले करना? Tell me so I can I can line up. करीब भाई, जन्म आई विल से जन्म. जन्म जन्म भी जबरदस्त है. प्लस जो हमारा इंग्लिश हिंदी में मैशअप है वो भी आपने सुना ही होगा, तुझे कितना चाहने आप लगे. जी ठीक है. Okay. So Varun, I तुझे कितना? Yeah. Okay. Okay. Varun, I line up that song. So hopefully बाद में ओके. सुलेमान भाई can join. Yeah. नहीं नहीं like इतना खराब तो नहीं होता इंडिया पाकिस्तान से. क्या हो गया आज? अरे अपने सुलेमान, maybe हाँ, you आज can कुछ just try to use without Wi-Fi. I think maybe that's the problem. Yeah. Anyways, so maybe you can जो है talk until the lineup जो है फैसल भाई. जी. But now you have more fans now. People are like you have more new friends now because of your आपने जो कि positive vibe launch किया. तो आप क्या कहना चाहेंगे आपके इतने सुनने वाले देखने जी. वालों को? No, yeah, नहीं, yeah, you अगेन can आई say थिंक that. Yeah, उनका उनका yeah. उनकी मोहब्बत, उनका प्यार. जी जी जी. क्या आवाज आ रही है? हाँ आ रही है यार. जी. मैं कह रहा था कि डेफिनेटली डेफिनेटली इस पीरियड ने बहुत सारे नए दोस्तों से बुलाया, बहुत सारे नए लिसनर्स मिले, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया और Yeah, कर ही रहे हैं. एक चीज जो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है वो ये कि आजकल अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करना ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस इज नॉट इजी. जी It's time consuming, it takes a lot of efforts, and also it costs quite some. जी. क्वालिटी अगर वैसी हो तो ठीक है, वो तो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं क्वाइट रेगुलरली. तो वही बात है कि
किस तरह से I'm still coming up with new ideas that how to entertain my listeners, you know, people who wants to listen, you know, हमारे इतने अच्छे अच्छे listeners यहाँ मौजूद हैं इस वक्त, निशा है, जी है, माला है, अनिल भाई है, श्रद्धाम जी हैं, like there's so many beautiful people out there and they wanted to hear Yeah, more and more. Now how to come yeah. up with some sort of strategy where we can produce that type of quality, you know, तो मैं उस पे काम कर Yeah. रहा हूँ. And I think very soon we'll be launching a show by the name Just for You. And basically in Just that for show you. we will be just for you. And show का जो main concept है वो ये है कि मैं अपने listeners से request लूंगा. तो मुझे Uh-huh. listeners भेजेंगे कि भाई फैसल, we want to listen this song in your voice. And then Uh-huh. again, I'm sure there are going to be so many songs, so I have to do some drawers. और उसके बाद फिर हम उस गाने को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो अगेन उसकी वो हम हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे लिसनर सुनना चाहते हैं, वी विल गिव देम दैट सॉन्ग. तो वो इंशाल्लाह Yeah, वेरी yeah. सून जस्ट फॉर यू हमारा एक शो आएगा और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते 2 हफ्ते पे एक लिसनर की रिक्वेस्ट को पूरा करें. यू नो, अभी मेरे Okay. पास ऑलरेडी कई सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, तो यू नो इट्स अगेन इट्स अ न्यू आइडिया हाउ टू एंगेज योर ऑडियंस, राइट? सो या तो हमें जो है नीलम बेद भी देख रही है, माँ जो है कैलगरी से, वन ऑफ योर बिग फैन एंड वन ऑफ आवर रियली गुड फ्रेंड. थैंक यू नीलम. एंड Manisha from London, she's Manisha, watching as oh, well. absolutely. Neela, Manisha, Gulshan. Oh my God, all of the wonderful Karima. So, oh my, awesome, awesome. This is so good to see all the wonderful friends out here, you know. Hey, Jalal bhai, honestly, I think I हाँ missed to say that the way you have brought, so COVID, COVID period was literally very, very critical for so many folks. And you या were one brave soul who kept going on and on and on and on and kept doing this good work from the bottom of your heart, you know, throughout this period without having a single, I would say, shed of, you know, scare on your face. I will say या that, you know, the way you have dealt this thing and entertained so many. कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि शायद अच्छाई करना या नेकी करना सिर्फ यही है कि किसी की मदद कर दो, किसी को पैसे दे दो, किसी को खाना खिला दो. That's not या everything. The way you are doing it, you are bringing people out of that depression phase. You are bringing people या out of that negativity. People wait to watch your shows. You know, they wait that, you know, because again, आपकी अपनी personality ऐसी, you always have that $1 million smile on you, you know, and then you bring the people and everybody gets, it is contagious. I'm telling you, the positivity you bring is contagious, right? All these folks who are there over there on online and chatting about it, think about it. At this moment, they have completely forgotten about everything else. या They are focused on what you are doing. So I will say salute to you for doing such a phenomenal job. And I don't know how अरे you do it. How do you get this energy? And you line up all of this. Maybe लगता होगा लोगों को कि आपके पीछे पूरी टीम बैठी है. But I know you don't have that big of a team. COVID में कोई टीम नहीं है. So unbelievable. And thank you very much for this phenomenal work. You know, अरे ये I would नीलम. say इससे बड़ी charity कोई नहीं हो सकती. अरे थैंक यू सो मच आपने फैसल भाई. You made me emotional यार. I never thought No. I think जो आप इसके जितने भी अल्फाज दिए जाए ना वो कम है, बिकॉज जिस दिल से आप कर रहे हो, जिस खुलूस से आप कर रहे हो, कहते हैं ना, you can feel it. आपके जितने listeners हैं ना वो feel करते हैं when you are talking about something. It's like you're saying it with your conviction, you know. So thank you very much. Thank you, Jalal bhai. अरे नहीं, I think जो है one thing I learned, because I've been doing radio shows for last 12 years now, and ऊपर वाले की दुआ से it's growing, which is good to see. But during pandemic, it just kind of next phase next step we had, and people started to join in, and आप जैसे artists आते हैं, so helps me going as well. And what I learned, like जो है फैसल भाई, if you run after कि यार कितने व्यूज आ जाएंगे, आई एम सॉरी टू कितने व्यूज आ जाएंगे, कितने लाइक्स आ जाएंगे, आई डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट. 5 लोग देख रहे हो या तो 500 देख रहे हो, ऊपर वाली की मेहरबानी, एनर्जी ऐसी ही रहती है. अगर एक मैं भी खुद देख रहा हूँ, सो आई एम हैप्पी, सो आई एम डूइंग समथिंग गुड. That's what I worry about all the time. And I think that energy goes to you, that energy goes to all our viewers. फिर वो भी लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, Absolutely. they share करते हैं. So that's everyone's energy come together, and then you see the result. तो ऊपर वाले की मेहरबानी जो है, अभी हमने जो है जो सलीम सुलेमान का हमने शो किया था, सलीम का जो है, सलीम भाई का बर्थडे स्पेशल किया था. सलीम मर्चेंट केम ऑन द शो एज वेल, तो 12 चांद लग गए थे हमारे शो को. तो Wow. ऊपर वाले की Wow. मेहरबानी है. तो आई थिंक ये सब देखने वाले की, सुनने वाले की सारा जो सपोर्ट है,
जो चल रहा है. Sonia is just जो है join us now as well. Anita from Pakistan as well. Tapasma India से देख रहे हैं. Nazneen, and of course हमारी good friend Nisha Devani, and she helps a lot as well. You know, get me going as well. So this is great to see that. And Sonia, hello Sonia, thank you so much. So okay, let me play your song. Then hopefully, hello Suleman bhai, can you hear us? नहीं सुलेमान भाई आपकी आवाज भी नहीं आ रही. Okay, let me play the song, but hopefully we'll get to Suleman bhai. Here we go. The river of my heart has broken free. I devote my love to you finally. खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया. The language of my heart is spoken through my eyes. I'm speaking the truth. I'm swearing in your name. I won't ever take a breath without you, because I'm really starting to love you. तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम. तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम. चाहने लगे हम, तुझे कितना चाहने लगे हम. The language of my heart is spoken through my eyes. I'm speaking the truth. I'm swearing in your name. I won't ever take a breath without you, because I'm really starting to love you. तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम. तुझे कितना चाहने लगे हम. इस जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूंगा तुझे सारी दुनिया से ही. मेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से ही. There is a road that only to you. I never even want to put any step on it. I won't ever take a breath without you, because I'm really starting to love you. तेरे बिन अब न लेंगे
वाह फैसल भाई क्या बात है यार माशाल्लाह आज देखने का मजा ही और आ रहा है आई डोंट नो व्हाई जस्ट ब्यूटीफुल Thank you. माशाल्लाह यार क्या बात है and you know people are going crazy नहीं, thank you on very the much. comment side wow okay let me try Suleman bhai again I think he's here here we go finally Suleman bhai can you hear us oh he's frozen again Oh my it's God. very it's unfortunate yeah इतना सुलेमान कुछ कभी करें problem यार. नहीं होता yeah हाँ. and you know we can't even hear him that's a problem कुछ otherwise he will just बोलो ना. oh my god this is bad आज कुछ like कहते हैं ना. नहीं हाँ. आज लगता है कुछ है नहीं ये like just Suleman bhai you know just try maybe I know you're watching Suleman you know just try through I don't know laptop or something I don't know well I know he's trying अच्छा you know I have to say that जो है Faisal bhai when this song was going जी. backstage you were enjoying like you were out of this world क्या हो रहा था please if you can share with us आप अभी की बात कर रहे हैं या जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस अभी वक्त की अभी बात कर रहे नहीं अभी just now when I was हैं? playing a You song know. you were या चल नहीं होता ये है ना कि एज एन आर्टिस्ट कहते हैं जब पहले आपके दिल को चीज फील होनी चाहिए उसके बाद वो चीज फील होती है मैं बड़े अरसे से लाइक आई बीन डूइंग लाइव परफॉर्मेंसेस यू नो एंड आई हैव yeah माय ओन स्टाइल ऑफ डूइंग लाइव परफॉर्मेंस द पीपल हु हैव सीन मी परफॉर्मिंग दे नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर बिकॉज अनलेस यू फील what you are doing, what you are singing, your audience is not going to connect with you. yeah और मुझे मजा ये जो गाना है ना इस तरह के जो गाने हो गए या जो सूफी सॉन्ग्स हो गए या मौला की शान के गाने हो गए उनकी एक अलग कनेक्शन होती है ठीक yeah है मुझे याद है आज से बहुत पहले when I was in Dallas you know I was singing you know and one guy came to me he said man I love your voice and the way you do it and the connection you bring to the song doesn't matter if it's like you know हकीकी you know ऊपर वाले के लिए है या किसी और के लिए है लेकिन उसका जो yeah कनेक्शन है ना वो है तो अभी जब आपने गाना लगाया ना तो आई कैन फील दैट वाइब यू नो ऑल टुगेदर एंड ऑनेस्टली अभी वो चूंकि रमजान की वजह से आजकल गाने कम हुए हुए हैं तो गाना सुन के थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी आ गई जी जो है करीमा सोमानी is watching as well आरिफ अहमद joined us as well तो आपके सारे friends and fans are here यार अपना क्या बात है wow good to see आई everyone नो थैंक back यू here ऑल सारे इतने खूबसूरत लोग हैं यू नो आई थिंक मैं कहता हूँ कि हम आप ब्लेस्ड हैं वी आर हैविंग सच अ ब्यूटीफुल ऑडियंस सच अ ब्यूटीफुल लिसनर्स यू नो अगर वो नहीं हो तो हम किसी लिए करेंगे yeah right? I know So yeah honestly, I think we are thankful to all of them. Their energy gives us energy, and I think that's the cycle which is keep going on, and that's what yeah keep us alive in this period. You know. yeah that's right yeah there's a comment from ZK and of course Sonia Nisha Devani, absolutely. Faisal Connect and Tashmir Meral is so true. There we go. Yeah, and Arif Ahmad and Neelam Bay from Calgary as well. Wow. No, we're gonna जो है अपना we're gonna play one more song because I know everyone is loving it. So let's continue on. So yeah, Faisal bhai, you know, to जो produce a song और जो आपने अभी किया with for your जो है अपना positive lounge vibe. So much work goes behind the scene. So, would you do it again? Oh, absolutely, in a heartbeat. You know, in a heartbeat, and I'm already working on it. It's not that you know this thing. The season 2, I think we have to wait because for any production of this quality of this level requires a lot of energy, and at the end, you know, it also costs quite some money. You know, right now, halat aise hai कि there aren't that many sponsors. You know, there aren't that many companies to back you up. You know, but on the same page we are trying to find a way where we can bring down the cost and still give a quality entertainment to our listeners. Yeah, And that's yeah, where we, you know, मैंने जैसे जिक्र किया कि just for you जो हमारा show आने वाला है उसके लिए I will ask all my listeners, you know, go and send me your request and we will start looking at it and see, you know, which one we want to do, you know. So एक हमें सिलसिला शुरू करना है because the bottom line is we want to make sure our listeners are entertained, they are getting good quality, good content, you know.
So yes, season 2 will happen. When it will happen, I think initially we were thinking maybe around June, July time. But based on where we are right now, nobody was thinking that the wave 3 is going to be worse than wave 1 and wave 2. So based on all these current situation and conditions, we might have to rejiggle our schedule. So let's see when Yeah. season 2 comes. Yeah. So especially Joe, during pandemic, I think the musician or artist or the live shows, that Ji. that like that part of like you can say our enjoyment. I think that जो है hit it hard, because no live shows, nothing is going on. तो आपको क्या लगता है कि once we are back to normal, let's say we are back to normal, next month, but I think it will take time, everyone to get it going again, नहीं? क्या लगता है आपको? Oh, absolutely. I think this is going to be a new norm, Jalal bhai. Yeah, Unfortunately, sorry to say, yeah, but I think the new norm is going to be like this. वैसे ही इस सोशल मीडिया के एनवायरनमेंट में और इस टेक्नोलॉजी के एनवायरनमेंट ने हमें सोशली बड़ा दूर कर दिया था yeah, फिजिकली हम ऑनलाइन physically, तो हम yeah, लोगों से रहते हैं मुझे याद है आई वाज इन yeah, गो ट्रेन फोर पीपल वर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एंड नोबडी वाज टॉकिंग we were yeah, already so disconnected and now this covid has gonna I will say make it worse 10 times or maybe more yeah, तो yeah, कहते हैं ना वो लाइक इसकी वजह से मुझे जो एक परेशानी होती है वो ये होती है कि यार हमारा जो ह्यूमन टच है ना वो कम से कम होता जा रहा है विच इज नॉट गुड विच इज नॉट हेल्दी आप अगर yeah, बहुत सारे वो देखें जो इश्यूज है जो मेंटल इश्यूज है वो क्यों है बिकॉज पीपल डोंट हैव पीपल टू टॉक टू राइट yeah, सोशल मीडिया कैन नॉट और ऑनलाइन डजंट रिप्लेस दैट ह्यूमन टच जब एक बंदा दूसरे बंदे के को एक हग देता है ना एक जबरदस्त वाला कि यार नहीं एवरीथिंग इज गोना बी ओके मेरे ख्याल 100 million views cannot replace that one hug. The feel which it absolutely, can provide you can जब yeah, किसी से आप हाथ मिलाते हो वो एनर्जी आपकी पास होती है ना दूसरे के पास वो चीज नहीं हो सकती ऑनलाइन की वजह से तो आई थिंक इट्स सैड बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज लाइक हम लोगों से हाथ मिलाते थे गले मिलते थे लाइक दोस टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑल गॉन राइट नाउ पीपल आर yeah, स्केयर्ड टू डू yeah, दैट yeah, so I think it's sad but again as a human being we'll come out of this strong and we'll survive. Inshallah, yeah, of course, Inshallah, yeah. inshallah. So when we just played that song, जो है तुझे कितना, कोई इसकी story है you can share with us when you were recording before we go to next song. नहीं आई थिंक अगर आपने मेरा पहला देखा हो तो इस गाने से मैंने अपनी ये कहते हैं ना एक ऑनलाइन प्रेजेंस की शुरुआत की थी द फर्स्ट सॉन्ग आई रिलीज वाज इन नवंबर 2019 एंड दैट वाज दिस सॉन्ग तुझे कितना चाहने लगा हूँ वो सिर्फ ये गाना नहीं था इसका ओरिजिनल गाना जो था उसको मैंने किया था कवर सॉन्ग किया था दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग और आज भी मेरे लिसनर्स में जहां भी होता हूँ कहते हैं यार वो गाना सुना दो तो जब हमने ये पूरा सीजन किया सीजन के अंदर हमने इतने मुख्तलिफ किस्म के गाने किए तो हमने कहा इट शुड एंड ऑन समथिंग व्हिच स्टार्टेड द होल जर्नी सो दैट्स व्हाई वी केम टू दिस वन एंड वी डिड सो अगेन आई विल से this song has special connection because that was the first song I did when I started doing the cover songs. Again, जिन लोगों ने नहीं चेक किया है फैसल रजा यूट्यूब पे आप सर्च करें आपको सारे गाने मिल जाएंगे पॉजिटिव वाइब्स लाउंज के भी और बाकी भी and frmusic.ca पे भी आप जा सकते हैं तो that's what the main I will say feel behind this song because it was the first one I did and still is the last one of season 1. Now season 2 Yeah, will have different flavor altogether. yeah. Okay, let me play the next song, one of my favorite. I don't want to say which one is it. There we go. जब Okay, कोई बात बिगड़ जाए, let's one of see my let's favorite. see Yeah. कौन सा आपका है हाय 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 जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा तुम
साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। আমার পথে তোমার ছায়া পড়লে আড়াল করে থমকে সে যাবে জীবন গতি, সে কি তোমার অজানা? রয়েছ তুমি বহু দূরে, আমাকে দেখে চলো না। এ হৃদয় ভেঙে গেলে জানো কি তা লাগে না জোড়া, লাগে না জোড়া। वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। मलाइका नाकुपेंगा मलाइका, मलाइका nakupenda malaika, nami nifanyeje kijana mwenzio, nashidwana mali sina we, ningekuwa malaika, nashidwana mali sina we, ningekuwa malaika. Kidege aku haza kidege, kidege aku haza kidege, nami nifanyeje kijana mwenzio, nashidwana mali sina we, ningekuwa kidege, nashidwana mali sina we, ningekuwa kidege. Tururu, 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 eh, 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 ah, 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 ah. सुपर भाईजान, सुपर मजा आ गया यार फिर से देख के यार। ये मैशअप, अच्छा ये आपने जो है काफी तो आपने जो काफी मैशअप किए हैं इज़ इट, कि आपने सारे 2-3-4 सॉन्ग सारे पॉजिटिव लॉन्च के जो आपने ऐसे ही था आपका जो अपना कॉन्सेप्ट जो था पहले? जी हम लोग का थोड़ा सा शुरू में तो इतना ज्यादा उसका नहीं था, लेकिन जब हम I think I can hear my people back. Okay. Is it No, okay, everything's Jalal? fine Okay, from my Jalal? side. Yeah, go ahead. जी नहीं तो हमारा शुरू में तो इतना नहीं था मैशअप का, लेकिन लेटर ऑन when we get into this, फिर हमने थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया। तो and it took us some time to come up with this whole idea. मेरी अपनी आवाज डबल हो रही है। Okay. I think
I think जो है yeah, everything is working some funny this is like today, isn't it? हाँ कुछ ऐसा ही लग रहा है. Okay, can you hear me now? Yes, I can hear you. I can hear you just fine. What I about think it's good now. it's good now? Okay. जी वो वॉइस गायब हो गई. जी बिल्कुल बिल्कुल. Awesome. अच्छा तो ये इसमें जो सोयली टच था ना, वो सोयली सॉन्ग जो था उसका एक, क्योंकि ये मैं तो कब से शोज कर रहा हूँ और मेरे साथ करीम खीम जी, he sings this song, and Amin Jiva they sing this song beautifully. So always it's in my vein, but never had the I would say courage to sing it. So जब ये आया और हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं फजल आबिद, उन्होंने कहा यार इस गाने के ऊपर ना इस पूरे उसको मैशअप को खत्म करो, और मलाइका की फील ही अलग है बिल्कुल. फिर हमने उसको थोड़ा सा और हल्का सा कहते हैं लाउंज टाइप की फील देने का दिया है. तो दैट्स हाउ इट केम आउट, एंड आई होप लोगों को पसंद आया होगा. Yeah, no, absolutely. Like जो है amazing. तो आपके जो अपने म्यूजिशियन थे, maybe if you can tell us like उनके नाम क्या थे? अरे वैसे अब तो इतने दिन हो गए उसके अंदर. हमारे पास जो गिटार पे थी मलिसा थी, रूबिन हमारा कीबोर्ड पे था, हावर्ड हमारा ड्रम्स पे था, और हमारा अन्नू बच्चा एक और वो भी गिटार पे था. प्लस पीछे बहुत सारी टीम थी जिसको हमने साथ में इंक्लूड किया था. तो आई थिंक इट वाज लाइक अ टीम वर्क व्हिच ब्रॉट सच अ ब्यूटी आउट हियर. Yeah, amazing. तो हाँ जो है अपना we'll do one more song अपने फेस्टिवल पे before we let you go. So that people can enjoy जो है जलाल भाई, अगर मेरी एक रिक्वेस्ट को आप इंट्रोड्यूस कर दें. Yes, सर बोलो. वो जिस गाने को मैंने लॉन्च ही आपके चैनल से किया था लास्ट ईयर जुलाई में, 11 जुलाई को, तो अगर वो गाना चला दें, क्योंकि कुछ ऐसा माहौल भी है, एंड आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट वन. व्हाट डू यू से? श्योर गो. अच्छा उनका वो जो था अली दा पहला नंबर. जी लाल मेरी बिल्कुल. मेरे हर शो की, मेरे अगर जिन लोगों को जानते हैं, जिन्होंने मेरे लाइव शोज देखे हैं, उनको पता होगा कि मैं ज्यादातर अपने शोज की शुरुआत करता हूँ उसके कलाम से, एंड वी एंड द शो आल्सो ऑन हिज कलाम. और सलीम सुलेमान का आपने जिक्र किया, हमने पता नहीं कितने शोज में बिस्मिल्लाह से हमने उस शो का आगाज किया, बिकॉज उस गाने की फील ही ऐसी है, बात ही वही है कि बिस्मिल्लाह उससे किया है ना. तो उससे हमने स्टार्ट किया. तो आज के शो में भी इतने लोग मौजूद हैं, आई नो दे ऑल लव दैट लाल मेरी. सो अगर आपको अच्छा लगे तो. जी बिल्कुल सर जी. आपकी जो है अपना क्या बोलते हैं कि आपकी क्या रिक्वेस्ट सर आंखों पर. यस ऑफ कोर्स. Thank you Jalal bhai, really appreciate it. And again for all the listeners, stay tuned, lot of things will come, and again अगर आपकी कोई request हो भेजिए, and we will have a proper place where you can send your request, and then we'll come back with your requests. Yeah, and जो है सुलेमान भाई का मैसेज आया है कि he's having lots of issues today, so he's sorry and apologizing he couldn't आज काम नहीं जो है नहीं बन सका. But inshallah we'll have Suleman by next time for sure, and hopefully, and he will be looking for some new. Inshallah, बिल्कुल. Yeah. तो हम फिर से शो कर लेंगे, इसलिए कि हमें तो खाली मौका चाहिए फैसल भाई को बुलाने का शो पे. सही बात है बिल्कुल. रहेगा साथ में होते तो फिर उसका बात मजा ही अलग हो जाता है. So let me play this song. एक शो जी go ahead. मैंने कहा कि एक शो ऐसा भी करेंगे जिसमें लाइव करेंगे परफॉर्मेंसेस. How about that? Done. ठीक है. You will be the host, and yes. I will have the whole team over here, and we'll do it live. It will be my honor to host the show for sure. Okay, here we go, guys. Enjoy the song. Okay. दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर. दमादम मस्त कलंदर सभी शहबाज कलंदर. हो लाल मेरी हो
चराग तेरे बलण हमेशा, चार चराग तेरे बलण हमेशा, पंजवा में बालण आयो बला झूले लालण हो, पंजवा में बालण हो, पंजवा में बालण आयो बला झूले लालण, सिंदरी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, हो लाल मेरी हो लाल मेरी। ऊंचा रोजा पीरा तेरा, ऊंचा रोजा पीरा तेरा, हेठ वगे दरिया बला झूले लालण हो, हेठ वगे हो, हेठ वगे दरिया बला झूले लालण, सिंदरी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, हो लाल मेरी हो लाल मेरी। घूम चड़कड़ा चड़कड़ा घूम चड़कड़ा चड़कड़ा घूम चड़कड़ा, सैया था तेरी कट्टन वाली जीवे, घूम चड़कड़ा सैया था तेरी कट्टन वाली जीवे, कट्टन वाली जीवे, कट्टन वाली जीवे, लड़िया वट्टन वाली जीवे, घूम चड़कड़ा चड़कड़ा घूम चड़कड़ा, सैया था तेरी कट्टन वाली जीवे। चरखा बोले साईं साईं बातिल बोले कू, चरखा बोले 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 चरखा बोले साईं साईं बातिल बोले कू, गए हुसैन फकीर ने माना गए हुसैन, गए हुसैन फकीर ने माना मैं नहीं सब तू, साईं तू ही मेरा सच्चा साईं, तू है मैं तेरा बंदा, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं, तू ही मेरा मौला साईं। घूम चड़कड़ा चड़कड़ा 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 क्या बात है यार, माशाल्लाह फैसल भाई, मजा आ गया फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ चल हाँ। यार, ये ना यार, मजा आ गया ये सॉन्ग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हमें जो है ईशा दीवानी, नीलम बेट, लता जी फ्रॉम कैलगरी, कौर, आरिफ भाई, इमरान भाई, ऑफ कोर्स सोनिया फ्रॉम कैलगरी। यार आपके बहुत फैंस हैं यहाँ पे कैलगरी में, बहुत से लोग देख रहे हैं, क्या बात है। कैलगरी में कई दफा आना हुआ और कैलगरी का क्राउड अमेजिंग क्राउड। आई स्टिल रिमेंबर ऑल दी, आई थिंक मैं 3 दफा या 4 दफा कैलगरी जा चुका हूँ, एंड एवरी सिंगल टाइम द लव एंड आई वुड से बहुत मिला वहां से ना, बहुत मजा आया और इस कदर दिल चाह रहा था वापस आने का, लेकिन क्या करें टोरंटो वालों का भी ख्याल रखना है। जी, एंड ऑफ कोर्स जो है करीमा सोमानी एज वेल फ्रॉम कैलगरी, मनीषा फ्रॉम लंदन, इमरान भाई फ्रॉम पाकिस्तान, तपस दास फ्रॉम इंडिया एज वेल। हेलो लता जी, थैंक यू सो मच। और देयर आर सो मेनी पीपल गाइस, अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो माफ करना। एंड ऑफ कोर्स योर गुड फ्रेंड एंड माय फ्रेंड निशा एंड जीके, they are commenting as well, and Amazing. we support Shabana Arif as Amazing. well. Amazing. Wow, क्या बात। Thank you everyone. You know, again, I'm not able to respond back to you guys, but thank you all for all the love and support. I think this whole period आप लोग का साथ रहा, आपकी एनर्जी हमें मिलती रही है, हम करते रहे। और हमें जो है नरमी जुमा दिख रही फ्रॉम ऑल द फ्रॉम Tanzania. There you go. See, क्या बात है। वाह। Oh, Nerm Jamal is in Tanzania right now? Okay. No. Didn't know that. This one is a Nermin Juma. Oh, Nermin Juma. Okay, Nermin Juma. Sorry. Okay, got it. Yeah. Hi, Nermin.
या ओके तो फैसल भाई विल नेक्स्ट शो इंशाल्लाह विल डू लाइव आपने यहाँ पे बोल दिया तो आप भी बुक कर नहीं सकेंगे तो विल डू इंशाल्लाह विल हैव अ लॉट्स ऑफ फन एंड नहीं नहीं, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि अभी चूंकि लॉकडाउन का पीरियड चल ही रहा है, वी हैव टू फाइंड अ प्लेस वेयर आई कैन हैव कपल ऑफ माय म्यूजिशियंस एंड देन वी विल हैव अ प्रॉपर maybe 2 hours show, and we will take people's request and we'll do a complete live version of it. yes thank you so much And it's Ishwar going to be a combined production of Coffee with Jalal. ऑलराइट क्या बात है वाह 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 वाह, आपने मेरा दिल खुश करा अभी तो आपको लाना ही पड़ेगा मुझे तो फैसल भाई before I let you go what do you want to say last message for all of us Last message again, guys, just stay safe. जहाँ भी हैं आप, प्लीज अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें, अपने नेबर्स को पूछ लें, उनको कुछ चीज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और ये कि just pray, कि इंशाल्लाह ये दिन खत्म हो जल्दी and we come back to our normal days and meet each other properly. Yeah, and there is a जो है couple of announcement I want to make before you go, Faisal भाई. अच्छा, अभी हमने जो गाना अभी प्ले किया लाल मेरी, उसमें मानसी पंड्या. जी, मानसी पांड्या भी होती. So Mansi is coming on the show very soon. We already confirmed that. Very nice. Very nice. He's coming on. I'm really excited Awesome. for her. Yeah, it's going to be first time for She's her. such a wonderful singer and very good friend, and yes, Mansi, I requested her and she said, yes, Faisal, I'll do it. Abhi Jiva was there. I think everybody knows, anybody जिसका म्यूजिक थोड़ा ताल्लुक है, अभी जीवा को जानते हैं, कहते हैं उससे अच्छे दिल का इंसान मैंने बहुत कम देखा है, बल्कि देखा ही नहीं है शायद. बहुत प्यार आती है. Yeah. No, so yeah, Mansi coming soon. और इंशाल्लाह जो है कॉफी जलाल जो first time we are doing a Ramzan Mubarak special. It's going to be on May the 8th. It's all designed for the Ramzan Mubarak. इंशाल्लाह आप भी join करेंगे, आप भी इंशाल्लाह देखेंगे और then give me the feedback. You'll see जो our artists, like I don't want to say more, so I will break the news later on. So yeah, Faisal bhai, thank you so much, yaar, for all the best and stay safe, stay healthy to you and your family. Inshallah, we'll see you soon. Thank you very much. And once again, Jalal bhai, thank you for doing such a phenomenal job. And I would say, आपको देख के हमें हिम्मत आती है कि नहीं यार, जलाल भाई कर रहे हैं, हम लोग भी करना है कुछ, कुछ प्रोड्यूस कर. So thank you again for keeping all of us smiling and engaged. Sunday की afternoon को बैठे आपको सुन रहे हैं, आप enjoy कर रहे हैं. And all the listeners, thank you again for being here, for such a great support. Thank you again, everyone. Thank you so much, Bhaijan. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. So guys, one and only Faisal Raza from Toronto, Ontario, and we are sorry, me and Suleman Bhai couldn't join us. Now it's time for our next group. They are waiting backstage. So you know what I'm going to do? So actually, I was planning to play the song जो कि NUR से Roshan just released. I think it was last week. Released on the Smiley TV and on the Smiley जो है Facebook and on the website. तो उनकी जो team है, there are about 8-9 singers from all over the world. So inshallah, what I'm going to do, instead of playing songs, so we'll play the song later on in the middle, in the half of the show, because I know there are some artists there from out of town, like from East Africa, from Pakistan, and it's very late for them right now. So let me get them on the show, then we'll play the song once we move on. Okay, here we go, guys. So first of all, our good friend from Edmonton, Alberta, Canada, Karim. Karim bhai. Yali Madad, how are you? How are you, Jalal bhai? Good, how are you? Sorry for a little bit late, yaar. Thoda hame 15 minutes late ho gayi. Not at all. Thank you very much. Excited to be back. Yes. Happy to have you, yeah. Each and every time. Good to see you. You look fresh again. For your show, I have to. हमारे शो की जीनत बढ़ जाती जब भी करीम भाई आते तो. Thank you, Jalal bhai. Okay, before we go, Karim bhai, I want to do a special show with you on devotional songs, music, and we'll play music as well. Then we'll talk about the devotional as well. Are we ready? We'll plan it nicely. I would suggest, Bahan, because some of my friends from Tanzania and Pakistan, if we can get them first. No. We'll do later on in next 2-3 months. Not अरे कभी भी आपके लिए कितने बजे भी anytime. Done deal. So you're on Joel live right now. Okay, so inshallah we'll do the special on devotional music. I love to do it. Anytime, Bahan, anytime. Okay, now we're gonna go to Pakistan. I believe Aslam Dao, he's in Pakistan. Yes, he's the composer. Aslam bhai. जी सर, कैसे हैं आप?
बस ठीक है. Oh, he just अपने आप को उन्होंने exit कर लिया. Oh, really? Yeah, wow. Mr. Pakistan or Mr. India? Yeah, no, he'll be back. Okay, now we're gonna go to Houston, USA. Our good friend Zora Sohail Ali. Zora Ali Madad, you are mute. Here we go. Mola, now you can hear me? Yes, I can hear you. I can see you as well. Kaisi ho? Shukar Mola, Molali Madad, I am still having my back screen, green screen because You are echoing. I don't know why. Okay, yeah, go ahead. Okay, so you see my green screen? That's the only spot I can do all my shows, and that's my fixed room. I have to come here, and it's a great honor to be a part of Kareem Gilani's song, and it's a Not great at all. opportunity. Not at all, Zora. Honor is ours. Right? Okay, now we'll go to East Africa, Tanzania. Fatima. Hello, Fatima. Yes. How are you? Good. How are you? Okay, there is a rumor about you. Couple of the rumors. I know I have to put rumors on the spot. What that's why that's the show very famous. Huh? Please share the rumors. I'd love to know. Okay, I heard like Zahid Jalal and Fayaz Kimji, they already got their biryani, but we are still waiting for your biryani. नहीं अभी time है. Time है? अच्छा ठीक है. वो rumors सही नहीं है. That's what those are rumors, right? And the second thing, because I heard when Kareem approached you to be in this show or in this song, so you had a one condition: as long as they are going on a Coffee with Jalal show, otherwise you won't be part of it. Is that true? Huh? That's how I get my fame. So it had to be a condition. Yes, sir. There it is. Thanks for your support, Fatima. All the way. Okay, now we go back to Pakistan. Aslam bhai, Ali Madad. जी सर, मैं लाइन पर हूँ. कैसे हैं आप जलाल भाई? आप कैसे भी? Good to see you. थैंक यू सर, थैंक यू. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हूँ मैं सबको एक साथ देखकर और खास तौर पर आपके शो में. अरे जो कि हर मर्तबा एक एनर्जेटिक वे में आ रहा होता है और बहुत मजा आ रहा होता है. No, thank you so much for your kind words. So अभी आप कहाँ पर है? कराची में हैं? कहाँ पर है? हेलो जी, आवाज. हाँ, आप जो कराची में? आवाज कट रही है आपकी, सॉरी. Okay, so let me go to our next artist, Raheem. He's in Dallas. Raheem, Ali Madad. Ali Madad, Jalal bhai, how are you doing? Good, how are you? Good to see you. Good to see you, and good to see everybody here as well from the team, and just excited to be part of the show, as always. Yes, and of course I want to give a shout out to your son Zain. He's a great artist for our show. Thank Future you. superstar, and hope to see him inshallah in our next, which is coming in June as well. But we're still going through some audition videos right now. So, Acha Kareem bhai, is there any more people are coming, or that's all we have? Muhammad Asani bhai is also coming. He's our guitarist. Okay. So by the time he joins, after we can start talk. Definitely. Yeah. Okay, so so I'll start with the Kareem bhai. Mashallah, जो है, congratulations on the NUR Roshan project. Beautiful song, beautiful lyric, beautiful music, and all these beautiful artists. So, ये किसकी idea थी और ये कब start हुआ? When did you start to think? So, man, first of all, both Aslam and myself, we are really honored to have so many talented artists in this project. All the singers, they are amazing singers, very talented singers, and the musicians, and it's so humbling experience to be working with all of them remotely, but learning from each one of them. So शुक्र है कि इन लोगों ने without their support this project would not have been possible. So how did it started? I think Aslam, how did this project was conceived? If you can start, that would be better. थैंक यू करीम. और जलाल भाई, मैं आपको ये बताऊं कि जब ये सॉन्ग शुरू किया था तो इनिशियली जो था हमारे पास मैंने जो एक छोटा सा मैंने वो म्यूजिक बनाया था, और जब म्यूजिक बनाया तो उसका हमने थॉट रखा था कि भाई ये थोड़ा सा हमें सूफी स्टाइल में या सूफी का कुछ सूफी प्रेजेंट करना है थोड़ा सा. लेकिन
सूफी के साथ साथ जो है हमें थोड़ा सा मॉडर्न वे ऑफ म्यूजिक इसमें डालने की कोशिश करनी थी। तो वही थॉट्स जो थे वो फिर करीम से डिस्कस हुए थे, और करीम ने कहा था कि भाई, करीम ने अग्री किया था, करीम ने कहा था आई एम इन, और फिर इसमें हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं और उसको मजीद लोगों को हम अपने साथ लेते हैं। इसको शुरू में हमने जो सोचा था कोरस बेस सोचा था कि थ्रू आउट जो है कोरस रखते हैं और अच्छा लगेगा, दूसरे जो कंट्री के फैंस है वो भी साथ में आए, मज़ा आएगा। देन जो है थॉट्स जो है बढ़ती गई और फिर जो है हमारा मूड Oh, he got disappeared. I think he is having some internet issue. So मैं Jalal bhai, you are mute. Earlier we had a Suleman bhai, he couldn't join us just because of the internet issues. He's back now. एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट इश्यूज हैं तो यहाँ पे कनेक्शन इश्यूज आ जाते हैं। तो फिर जब इसको फिर हमने आगे बढ़ाया तो फिर हमने इसकी म्यूजिक मजीद जो है वो उसको क्रिएट किया, और फिर जो है करीम भाई ने जो है वो इसकी लिरिक्स इतनी ज़बरदस्त लिखी है। जो चीज़ हम म्यूज़िक में चाह रहा था और जो चीज़ लिरिक्स जिस हिसाब से चाह रहे थे उस हिसाब से उसने इतना अच्छी तरह से उस वर्डिंग्स को जमा दिया कि जिस तरह से हम ये चाह रहे थे मौला से रिलेटेड हो, और जो कायनात जो मौला ने बनाई है उससे रिलेटेड है कि भाई हर जर्रे पर जो है मौला का निशान पाया जाता है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो है मौला की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकती। तो वो चीज़ जो है वो पूरा इम्पैक्ट दिखाना था, बताना था थ्रू वर्डिंग्स, और करीम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको जो है वो राइट अप किया। खासतौर पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं जलाल भाई कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो वी यूजुअली प्रज्यूम कि भाई अगर मैं मेडिटेट कर रहा हूँ तो मेरा जो मुर्शिद है जिसके लिए मैं मेडिटेट कर रहा हूँ मेरे साथ बैठा हुआ। तो जो फर्स्ट जो अंतरा अगर आप सुनेंगे उसका जो कि फ़ातिमा ने सिंग किया था उसको, उसमें जो वर्डिंग्स थे वो था कि भाई हो सकूं मैं तुझसे रूबरू, ये है मेरी जुस्तजू। मतलब जो हम जिस तरह से मेडिटेट करते हैं और जिस तरह से हमें He just disappeared. Wow, what a issue. Okay, yeah, Karima, you can start. As Aslam bhai said, Aslam bhai had some ideas उनके जहन में थे composition के, and then he approached me around mid of December. Sorry Aslam, you are back. So करीम आप कंटिन्यू करो क्योंकि थोड़ा सा मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वो शायद बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है। No, you continue जब तक इंटरनेट चल रहा है, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, ओके। तो फिर वो जो था जो बताने की जो मैं बात बता रहा था कि जो चीज़ हम जिस तरह से चाह रहे थे कि वर्डिंग्स इस किस्म की होनी चाहिए, म्यूजिक इस किस्म का होना चाहिए, तो मौला के फजल करम से जो है वो वर्डिंग्स उसी किस्म के बैठे जिसमें हमारे जो सॉन्ग का जो मकसद था ना वो बयान हो रहा था कि हम बयान क्या करना चाह रहे हैं कि हो सकूं मैं तुझसे रूबरू, यही है मेरी जुस्तजू, तेरा ही जिक्र जो है उसी से मेरी पनाह है। तो वो सारी चीज़ें जो है और ज़र्रे ज़र्रे में जो है तेरा आया मौजूद है, हर जगह पर मौला का जो है साथ, उसके बगैर कोई कायनात का पता नहीं हिलता। तो वो सारी चीज़ें जो हम बयान करना चाह रहे थे वो करीम ने अपने लफ्ज़ों के तहत इस तरह मज़े से बयान किया कि उस बहुत मज़ा आया था। खैर कहने का मकसद है माशाल्लाह। ओके, मोहम्मद असानी भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। मैं इंग्लिश में बात करूँ, उर्दू में, गुजराती में, किस में बात करूँ? अरे आप तो हर साल मौला है। anything, yeah, whatever you like, you feel like. Okay. Yeah, mashallah. Yeah, wonderful to see you all. Ya Ali Madad, I still haven't met most of you personally, so I've only met Kareem personally. Actually, yes, that's it really. But I've seen your faces so many times. Lovely to see you all again, and I'm seeing a lot of artists doing some great work. So wonderful. Yeah, hello everyone. And Jalal Bhaiya and Zoya, how are you guys? Doing good, thank you. Good. And Fatima, I've enjoyed your voice very much recently. Thank you. Nice to see you. Thank you. Wonderful. And we lost the composer, right? He's yeah. अपना देखो फातिमा, तुम कितनी मशहूर हो गई हो अपने शो में आके. Everyone knows you. Yes. That's why it's the condition. If I need to sing a song, it has to be on your show.
अभी फातिमा ना कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाती हैं कि किसी के लिए परफॉर्म करना तो जलाल के शो में जाना जरूरी है, वरना मैं नहीं करूंगी कॉन्ट्रैक्ट। Thank you so much for your love. Thank you. So why don't we do the okay? So I'll play the song, and we'll we'll talk about the song. Is that okay, guys? Yes. Wonderful. All right, here we go, guys. So let me put the song on. It's ready to roll. It's a beautiful song. Moon Singh Roshan. Here we go. A voice. मौला हो मेरे मौला, तेरे ही नूर से रोशन ये जहां। धरती अंबर नदियाँ और सागर, ज़र्रे ज़र्रे में आया तेरा निशान। हर सू है तेरा नजारा, तुझसे ही सांसों की धारा, ना तेरा कोई किनारा, ओ मेरे मौला मेरे यारा। हर सू है तेरा नजारा, तुझसे ही सांसों की धारा, तुझ पे ही तन मन वाला, ओ मेरे मौला मेरे यारा। साए में तेरे हमें सदा रखना, साए में तेरे हमें सदा रखना, मांगते हैं हम दिल से ये दुआ। मौला ओ मेरे मौला, तेरे ही नूर से रोशन ये जहां। खो सकूं मैं तुझसे रूबरू, मेरी है बस ये जुस्तजू। तेरी पनाह है मेरा जुनून, तेरे ही जिक्र से मिलता सुकून। रंग में तेरे रंग जाऊं, गीत खुशी के संग गाऊं, नूर का जाम पिला दे साकी, मस्त मलंग हो जाऊं। रंग में तेरे रंग जाऊं, गीत खुशी के संग गाऊं, नूर का जाम पिला दे साकी, मस्त मलंग हो जाऊं। साए में तेरे हमें सदा रखना, साए में तेरे हमें सदा रखना, मांगते हैं हम दिल से ये दुआ। मौला ओ मेरे मौला, तेरे ही नूर से रोशन ये जहां।
झुकाए लिए अर्जियां, दर पे आए भर दे झोलियां। सारे जहां का तू है कलंदर, नूर के कतरे हम, तू है समंदर। तेरी चाही मेरी चाहे, होगा बस जो तेरी चाहे। हाथ मेरा थाम ले तू, बस मेरी अब ये दुआ है। तेरी चाहे मेरी चाहे, होगा बस जो तेरी चाहे। हाथ मेरा थाम ले तू, बस मेरी अब ये दुआ है। साए में तेरे हमें सदा रखना, साए में तेरे हमें सदा रखना। मांगते हैं हम दिल से ये दुआ। मौला ओ मेरे मौला, तेरे ही नूर से रोशन ये जहां। धरती अंबर नदियां और सागर, जर्रे जर्रे में आया तेरा निशान। हर सू है तेरा नजारा, तुझसे ही सांसों की धारा। ना तेरा कोई किनारा, हो मेरे मौला मेरे यारा। हर सू है तेरा नजारा, तुझसे ही सांसों की धारा। तुझ पे ही तन मन नवारा, ओ मेरे मौला मेरे यारा। साए में तेरे हमें सदा रखना, साए में तेरे हमें सदा रखना। मांगते हैं हम दिल से ये दुआ। मौला ओ मेरे मौला, तेरे ही नूर से रोशन ये जहां। धरती अंबर नदियां और सागर, जर्रे जर्रे में आया तेरा निशान। मौला ओ मेरे मौला, तेरे ही नूर से रोशन ये जहां। All right, congratulations, guys! Beautiful, beautiful song, beautiful lyrics, and beautiful background. You know, there are so many comments are coming regarding the beautiful sceneries you guys had, like beautiful voices, beautiful lyrics, beautiful music. So, I want to ask you one thing to all the artists. We'll start with you, Karima. Oh, there is no Karima. There is Karim. Yeah, sorry, Karim. Like when you did your part, so yeah, what was your thought about the background? के background कैसा होना चाहिए? What was your thinking? So Bayan, जैसे कि असलम ने कहा कि when we started to think about this particular song, एक कुरान की आयत है, आया नूर, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है, okay? अल्लाह नूरु समावाति व मा फिल अर्ज़. So we wanted to show his signs, and one can see his signs all around us. So when we as a team, when we came together on Zoom, when we were discussing about this song and the lyrics, all of us had thought that it would be good to do it outside, to showcase the nature. ठीक है ना, इस गाने में जिस तरह के साइंस हमने जमीन, आसमान, पहाड़, दरिया, और we are so lucky to be in Canada or close to Calgary, close to your home, then Lake Louise, the nature which really play a big part there. So this is in love of our divine. लेकिन अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है. तो इसी आइडिया पर हमने तमाम टीम, we all came together as a team, and if you must have noticed that all of us, from Australia to Tanzania, from Pakistan to all of us were outside. We were facing nature,
And it was amazing that how each one of us came together to represent the nature. And truly इसमें मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, वो ये थी, जो तेरी चाह है वो मेरी चाह है, होगा बस वही जो तेरी चाह है. So relevant to the pandemic in which we are in. We are all trying our best, ठीक है, लेकिन होगा वही जो उसकी चाह है. और उसकी चाह वो उस वक्त होगी जब वो आप उसके नूर के अंदर अपने आप को बज़म कर देंगे, उस जुस्तजू के अंदर खो जाएंगे. और आपको जो सेटिस्फेक्शन उसके नूर से मिलता है, उसकी इबादत से मिलता है, वो आपको उस जगह पर ले जाता है और नेचर के अंदर मिलता है, ठीक है ना जी, जो जिससे यू आर एबल टू कम आउट ऑफ व्हाटएवर मेंटल टेंशन वी मे हैव. बहुत सारे प्रॉब्लम्स वी आर ऑल फेसिंग. इट इज हिम हु इज गोइंग टू let us come out of this situation. Right. Aslam, you want to add anything? No, he's frozen. No, sorry, Aslam bhai, I think you are frozen. Okay, go ahead. Okay, so actually we'll go to Zora. Zora, what do you want to add in it? Okay, when you did your part. I will say, first of all, it was a first time ever experience to sing and do the video recording in nature. It was a very new experience for me, and I really loved it. Sarah, we used to do always indoor video shooting. That's one thing I learned from that teamwork. Secondly is the getting to know all the great artists. Like, it's like whatever part you are doing, but you are making more friends. You are knowing more people around, our community. And so I heard Fatima, but I never know, like, she sings so well. I saw like Raheem's grandma, like a mother-in-law performing, and Zain is an awesome singer. I know Mohammad Asani is a very good sitar player, but working with them, like, awesome. And all the like, nothing was like, keyboard pe sab install and you are playing. No, everything was natural instruments. And just like Kareem, my favorite part of the song lyrics is exactly the same. Teri चाह ही मेरी चाह है, होगा बस जो तेरी चाह है, हाथ मेरा थाम ले, बस मेरी अब ये दुआ है. And then साए में तेरे हमें सदा रखना. Like, whatever, यही तो हमें चाहिए, no? That's what we are always asking for. So that's what a great learning experience for me. And I'm glad that Kareem just reached out to me, and I saw his message. I told him, like, 5 a.m. in the morning, I woke up for Bandagi, and I saw Kareem message, and I told him, let me do my prayers, and then I will respond him back. And I was like, I can't say no to him, because सुबह सवेरे सुबह शादी के वक्त इतना अच्छा मैसेज आया, तो मैं कैसे no बोल सकती हूँ. That's true. And speaking of the future superstar, your son Ilan Ali, it was a great surprise for us too. Zora, beautiful, like he did his performance, and inshallah we'll see him in the next show as well. So we'll go to Raheem bhai, how was your experience then, when you, जब भी आपको अपना first call आई कि you gonna like would you like to be part of the project, what was your thoughts? Yeah, first of all, I felt very blessed, mashallah. Dr. Kareem, हम लोग अक्सर कांटेक्ट में रहते हैं, because माशाल्लाह से ज़ेन के उस्ताद भी हैं, ज़ेन को जी सिखाते हैं. So और मैं भी अक्सर ज़ेन के साथ इनकी क्लासेस में बैठा होता हूँ. तो कुछ ज्ञान सीखने मिलता है और नॉलेज मिलती है, definitely. So but when Dr. Kareem ने मुझे बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि आप इस song का part बनो, तो first of all, I just felt so blessed. And second, I know that he's done so many wonderful productions, and Aslam bhai bhi, इन्होंने इतने अच्छे songs और बनाए, तो there was no chance that I was going to say कि भाई मुझे नहीं करना है. Obviously, I was right away, I said, definitely I'm doing it. Whatever you need, I'm there. आपको सुबह के टाइम पे चाहिए, दोपहर के टाइम पे, जब भी आप मैं ready कर लूँगा. And I know कि
डॉक्टर करीम आपको याद भी होगा कि जब मैंने पहले अपना रिकॉर्डिंग भेजा था तो थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम वगैरह कम था एंड थोड़े से इश्यूज थे, but right away I was like, okay, no problem, let's do it, because I didn't want to miss the opportunity. So thank you so much to the entire team for making me part of this project. And by the way, इतने अच्छे comments भी आ रहे हैं. Thank you all the people who are listening right now, and also listening to our song on YouTube. We have had so many hits, mashallah, and inshallah I will keep growing. And आपके शो पे भी आए हैं जलाल भाई, तो inshallah और लोग ये song को सुनेंगे और सराहेंगे inshallah. Bilkul, inshallah, inshallah. And of course, we are live on Facebook as well as on the YouTube. So people are watching on YouTube as well, especially from Tanzania. Speaking of Tanzania, Fatima, what was जब ये आपको फोन आया जो हमारे करीम भाई का, तो आपने क्या? I was really excited. I was really, really excited. I saw a message from him and then we spoke. And the first thing I did was I looked for him on Facebook and showed my mom. Okay. And I was really excited. It was an honor, truly an honor to be part of this journey with everyone. I think it's been said on the show previously, but we all learned so much more when we worked on collaborations with artists from around the world. Absolutely. Yeah. It's never ending, and the opportunity is just so humbling. It's really, really humbling. So, yeah. I had a couple of areas where I needed to improve my Urdu, a couple of words and blends, and Dr. Kareem Gilani was amazing. He called me up. I spoke to the other artists as well. Try to fix a couple of pronunciations, and so I learned so much through this song. So it was a humbling experience. Nice. What about you, Mohammed bhai? Before you say anything, Mohammed bhai, we want a kind of introduction from you, because I know you are new to our show, maybe for our viewers as well. थोड़ा introduction हो जाए आपकी तरफ से, then we'll go to Aslam bhai. जरूर. मेरा नाम मोहम्मद असानी है. मेरा originally I'm from Karachi. At about 13 or 14 years of age, I started playing for garden orchestra, Darkhan orchestra. अच्छा, माशाल्लाह. तो वहाँ से मुझे बिल्कुल जो म्यूजिक में जो जुनून होता है ना, जुनून आप समझते हैं, like yes, पागलपन म्यूजिक का वो हो गया. तो मुझे दो शौक थे, एक तो प्लेन चलाने का और म्यूजिक का. तो फिर मैं म्यूजिक में मुझे बहुत शौक हो गया. तो when I was 19, I moved to England to study piano. Wow. From Pakistan, and then I studied music in England. मैंने डिग्री ली म्यूजिक में. फिर then I was teaching at the Royal Academy of Music as a visiting lecturer, so on. Teacher बन गया. फिर मैंने सितार शुरू किया. I played piano, but when I was introduced to sitar, तो फिर इसी तरह से होते होते I went full time into music. I've been doing full time music. Vancouver में I teach at the Vancouver Symphony Orchestra School of Music. My specialism is both Eastern and Western music and world music. So I try to I've just released my album and so on. So that's what I do. That's why I live music. That's it. Yes. Mashallah. Speaking of garden orchestra, because I said before on the show as well, my dad used to be in garden orchestra. Really? And yeah, he was a drummer that when I was only like 5-6 years old. Yeah, so he was with Mehdi sir and Jafar Sadiq in that era. Yeah. So, those are legends of our community. Yes. Jafar Sadiq, Mehdi Saab, Mukhi Mehdi Bhai. So such beautiful songs they wrote. I don't know if you heard Silver songs. Silver. Yes. Yeah, of course. I was in all of those recordings as a 13 years old. I was playing bass guitar in those recordings. बहुत magical time था वो, बहुत ही एक अच्छा time था Silver Jubilee का. So I was so fortunate to be part of that. Yeah. और वहीं से मुझे शौक हुआ ना, that inspires you. तो हमारे जितने भी young जो बच्चे देख रहे हैं या जो भी म्यूजिक की कोई age नहीं होती है. Music you can learn at any age. उसमें कोई age. Yes. So it's always music will always give you. It will always return. एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन मुझे मिले थे जिसने मुझे इंस्पायर किया. उन्होंने मुझे कहा कि बेटा म्यूजिक से प्यार करो, ये कभी बेवफाई नहीं करता. क्या बात है. वाह क्या बात है. It will always give you back.
यस क्या बात, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। असलम भाई, so आपका इंट्रोडक्शन तो होगा, सॉरी मैंने आपको पहले पूछा नहीं, because a lot of people they don't know you, maybe you want to say a few words about you. And he's frozen. Okay, so maybe you want to reconnect, Aslam bhai, if you can. Okay, there we go. तो like जो अपना जो है करीम भाई, what I've noticed in your song, जब भी आप कोई भी प्रोड्यूस करते हो, कंपोज करते हो, whenever you're जो भी आप सॉन्ग करते हो करीम भाई, maybe you can, so what I've noticed that you always have sitar, tabla, flute, bansuri, and flute is my favorite instrument. So, and of course, I think these are you can say traditional instrument. Absolutely. Any new artist, like either singer or musician, they have to learn these or they have to know about it. Am I right? Man, I think it's a very good observation. और जैसे ज़ोरा ने भी starting में कहा कि we always strive for the best sound, and luckily within the community we have like Mohammad Asani, we have Anish Chandani, we have Shanabaz Bhai. All of these are amazing, talented artists, and they are professional musicians. So we are so blessed to have role models like them who play these instruments. And although many, at times people play only on keyboard and they programmed music, but to be very honest, you can't get the similar sound on keyboard. जो सितार बजता है ओरिजिनल या जो फ्लूट बजता है ओरिजिनल, और उसके अंदर जो मेहनत होती है और जो साउंड होता है, you cannot get the same sound through your computer. इसी वजह से जो हमारे पुराने गाने थे, लोग क्यों कहते हैं कि वो पुराने गाने वो सदाबहार होते हैं कभी कभी, और आर.डी. बर्मन के और एस.डी. बर्मन के, क्योंकि उसके अंदर मेहनत होती थी। उसके अंदर जो 50, 60 लोगों का ऑर्केस्ट्रा होता था, उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन होती थी, उसके अंदर अच्छी लिरिक्स होती थी, अच्छी म्यूजिक होती थी, और एक अच्छा कोलैबोरेशन होता था। तो जब इतने सारे टैलेंटेड लोग आपके साथ मिलकर काम करते हैं, सिंगर्स भी और लाइव अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी, तो उसके अंदर खुद ब खुद एक एनर्जी आ जाती है। So it was a humbling experience coming together, and to be honest, Anish Bhai is not here, Malik is not here from Australia, and Shanawaz Bhai. Each one of them are extremely talented. They are gems. And without each one of them and their support, this project would not have been possible. So, my humble gratitude to each one of them who are here and those who are not able to join. It's a great team effort and nothing else. Yeah, true. Very well said. Aslam bhai, I think hopefully you can talk now. Hopefully मेरी आवाज शायद आ रही होगी. Yes, आ रही है यार. थोड़ा अपने बारे में बताओ भाई कि आप कौन हो यार? Again, poor guy. मैं बताऊं थोड़ा सा इनके बारे में? Yes, please go ahead यार. तो असलम भाई जो है वो गार्डन ऑर्केस्ट्रा में कीबोर्ड प्ले करते हैं, and he has been a part of दरखाना ऑर्केस्ट्रा in Pakistan for the last 2 decades. अच्छा. अभी गोल्डन जुबली में जो गीत आए थे, सॉरी बहुत सारे आई एम वेरी मच सॉरी कि भाई मेरा जो ब्रॉडकास्ट है वो बार-बार जो है वो लूज हो जाता है. No worries, we understand. Anyways, about me is something. I am from Karachi, Pakistan, और मेरा ताल्लुक भी जो है वो गार्डन ऑर्केस्ट्रा से है. माशाल्लाह. And I am still working as a member of Garden दरखाना ऑर्केस्ट्रा. Wow. साथ ये जो म्यूजिक का जो है सिलसिला जो चला है, उसमें बस वो शौक था. शुरू में जो है सिर्फ शौक से ही हमने सीखा था, और बाद में फिर अब जो है ऑर्केस्ट्रा की तरफ से जब परफॉर्मेंसेस के मौके मिले तो उस फिर जो वहाँ पे हमने परफॉर्मेंस दी, उस थोड़ा सा फिर वो परफॉर्मेंस देते क्रिएटिविटी का आइडिया आया. क्रिएटिविटी करते कुछ सॉन्ग्स परफॉर्म किए. तो 1-2 सॉन्ग पहले भी परफॉर्म किए थे. तू है मेरा आता मैं तेरा हूँ गुलाम किया था. फिर एक जो Okay, Karim, continue. So he said about तू है मेरा आका मैं तेरा हूँ गुलाम, और भी काफी कंपोजिशन इनकी अपनी थी जो गार्डन से आई थी. And I knew him from
Al Yasrab, where I used to teach. Yeah. और फिर वहाँ पर जो है फिर जो है एक दो सॉन्ग और परफॉर्म किए क्रिएट किए, जिसमें था प्यारे मौला तशरीफ लाओ रे, वो क्रिएट किए। देन फिर जो है अब जब स्माइली टीवी की तरफ से थोड़ा सा ये करीम भाई की तरफ से जब एक इंट्रोडक्शन हुआ और इंटरेक्शन हुआ हमारा, तो हमने एक नया बिल्कुल डिफरेंट क्रिएट करने का सोचा था। हमने कहा डिफरेंट क्रिएट करते हैं और थ्रू आउट हम टाइप हो थोड़ा सा, लेकिन मॉडर्न म्यूजिक के साथ हो, तो बस वो ये क्रिएट किया। बस चैलेंज हमारे लिए ये था कि हमने जो मुख्तलिफ जगहों से जितने भी आर्टिस्ट हमारे पास आए और उनकी वॉइसेस को, उनकी म्यूजिक्स को जो गैदर करके हमें जो उसको इंटरेक्ट करना था ना, वो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। मोहम्मद भाई ने जो है, अच्छा मोहम्मद भाई के बारे में थोड़ा सा ये कहूँगा, शायद इन्होंने जो है होमेज सेरेमनी में भी जो है उन्होंने परफॉर्म किया है हमारे लिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। Yes, I remember from that. You're right. Yes, और also at the Hazim Imam's birthday, जो 80th birthday. Yes, yes, yes. क्या बात है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारे लिए। Okay, Karim bhai, continue. So what he was trying to say, now how do we get all the artists and musicians and song together? I always say that COVID is really a curse to many, but it has also taught us many lessons. True. True. COVID has really pushed us to go beyond our comfort. इन दोनों ने जो है हज़रत इमाम के सामने जो है होमेज सेरेमनी में परफॉर्म किया था, और ये हमारे लिए ऑनर था कि हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ थे। शुरू में जब हमने जो है जब डेमो म्यूजिक जब बनाया था मैंने वो करी, तो उसमें ये था कि हमने जो है सारी चीज़ आर्टिफिशियल डाली थी, कीबोर्ड बेस के, भाई हमने थोड़ा सा तबला भी डाला था, वैसे ही जो हमारे पास लूप्स होते हैं उसमें डाला था। देन भी हमने फिर ये सोचा कि थोड़ा सा लाइव होना चाहिए, लाइवली होना चाहिए और बिल्कुल लाइव हो जाए। फिर मोहम्मद हसनी जो है वो जहनों में आया, फिर हमने कहा मोहम्मद भाई से कांटेक्ट किया, तो मोहम्मद भाई ने कहा ओके आई विल गिव यू। तो हमारे लिए बहुत फख्र हो गया कि यार गुड है, इट्स माय प्लेजर। जी। और जो अनीस भाई ने जो है अपनी फ्लूट डाली, तो उसमें तो बिल्कुल ही जो है उन्होंने सॉन्ग का जो मूड है वो और भी चेंज कर दिया। तो थ्रू आउट जो था वो इतना लाइवली हो गया, और फिर बाद में जो हमारी जो सिंगर्स ने जिस तरह से मूड में गाया और जो शायरी जो बिल्कुल बैठी है, तो उसमें फिर थोड़ा सा बहुत डिफरेंटली बहुत मजा आ गया। That's true. Yeah. So जो असलम भाई, let me ask you this. आप अभी जो है कराची में हैं, okay, he's gone now. So anyways, तो अपना जो है मोहम्मद भाई, I think अभी जैसे असलम भाई ने बोला, you had a chance to perform in the homage and Hazmam birthday. I think you mashallah feel blessed. आपको माशाल्लाह इतने मौके में तो कैसा फील होता है? मतलब ये है कि लाइफ टाइम की मेमोरीज होती है, मतलब एक लाइक इज हाइट ऑफ योर व्हाटएवर यू डू। ऐसा चांस आपको अगर एक मर्तबा भी मिलता है तो वो कभी आप भूलेंगे नहीं जिंदगी में। नहीं। वो आपके, अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या। प्लीज गो अहेड। या प्लीज गो अहेड प्लीज। अच्छा, तो उसमें बड़ा एक तो ये था कि फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो कोई 20 ऐसे आर्टिस्ट थे वहां पर, और एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था वो हाजिर इमाम के बर्थडे पे। अच्छा, पीस बनाना था, तो उसमें अब इतने सारे आर्टिस्ट हैं, सबकी अलग अलग आइडियाज हैं, हाउ डू वी पुट देम टुगेदर। और हमको वैसे 15 मिनट का दिया था टाइम, ठीक है ना, इतना पीस, क्योंकि इतने सारे डिग्निटरीज आप बैठे हैं सामने और वो बैठ के आपको सुनेंगे, तो यू नीड रियल क्वालिटी, उसमें कोई मिस्टेक का चांस कुछ भी नहीं है। या सही बात है। फ्यू डेज जब रिहर्सल चल रही थी, हम सब फ्रांस में, मतलब पेरिस में, कोई ईरान से आया है, अफगानिस्तान से आए हैं लोग, नॉर्थ अमेरिका एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो उसमें यह था कि पहले 2-3 दिन तो सब रो रहे हैं। यार सही बात। मैंने कहा भाई कुछ काम भी करो यार। तो फिर इस तरह से वो ये था कि वो बाद में तस्बीह हो रही है और कोई रो रहा है, कोई ये हो रहा है, बट विच टोटली इज आई कैन अंडरस्टैंड। फिर परफॉर्मेंस से पहले मैंने सबको ये कहा कि एक बात याद रखना कि वी आर ऑल कोर्ट म्यूजिशियंस। जो पुराने इंडिया के जमाने में जब अकबर बादशाह होते थे ना, तो they were the biggest patrons of North Indian classical music and qawwalis. तो मैंने कहा कि imagine you are a court musician. और आप you're musician first and then like an Ismaili, be a professional.
Because if you go as a smiley on stage, you're gonna cry and you're gonna because it's so overwhelming, na? So anyway, those were some of the nuances of like how one feels when we are doing this kind of thing. And एक और आपको फिर बताता हूँ, ये तो हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पीस किया। फिर जब सेकंड टाइम जब होमिद सेरेमनी हो रही थी, तो हमको 10 दिन रिहर्सल के थे और हमें तो सिर्फ नशीद बजानी थी। तो हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस की। तो जहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो एक फ्रेंच म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन था। तो वहाँ का जो हेड था ना, तो उससे मेरी गपशप होती थी। तो 4-5 दिन पहले आ गया परफॉर्मेंस से पहले और मेरी तरफ देखता कहता उसने बड़ा अजीब सा मुंह बनाया कि ही वाज डिसअपॉइंटेड। तो मैंने कहा कि क्या बात होगी फिलिप? तो वो कहता है यार बैड न्यूज, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है जिस दिन आपका प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होगी, आपका प्रोग्राम नहीं होगा। तो हम लोग सब थोड़ा सा मतलब वी वर डिसअपॉइंटेड, इतनी मेहनत से गए, दिस इज अ हिस्टोरिक इवेंट एंड दिस एंड दैट। तो फिर क्या हुआ कि जिस दिन प्रोग्राम था तो हमने रिहर्सल के लिए हम लोग गए, तो वो वहां पर मार्की नहीं थी, ओपन था, आपने जैसा देखा होगा बिल्कुल ओपन था। तो सब लोग कह रहे थे कि मार्की लगा लें तो हमको ज्यादा चांसेस है कि वी कैन प्ले एंड सो ऑन। तो नहीं, उन्होंने कहा हाजिमा doesn't like marquee, wants direct connection with the sky. फिर ये हुआ कि प्रोग्राम से पहले रात को इतना तूफान आया और हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, just in case we are not able to play. The next day we go and we are told that if it rains we are coming back on the coach, we're not even going to enter there. Or we were on standby until Homed ceremony was around 9 o'clock. Until 8:45 it was raining and कोई chance नहीं था। और बस फॉर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल से सन हो गया और we were there. Wow. These are some of the incredible things that that just happen, you know. तो काम तो चलता ही रहता है, माशाल्लाह। क्या बात, miracle, माशाल्लाह यार, क्या बात है। So that was quite a pleasant experience. Yeah. तो ये महोदय आप अभी कहाँ पर, एडमंटन में हो कहाँ पर? नहीं, मैं वैंकूवर में हूँ। अच्छा, वैंकूवर में, ओके ठीक है, because I thought for some reason you were in Edmonton. No, good. So Zora, you know, I know you are busy on your phone as well. Like no, I'm checking. No, आपने देख लिया. I know because I'm going around, so everyone's gonna engage here. So Zora, you know, like I know you've been performing, जो है अपना जो as well now, जो है lately you are busy as well. तो किस तरह feel होता है कि now you are जो है collaborating with other artists? तो ये किस तरह की feeling आती है? A very nice feeling. बहुत ही अच्छा लगता है. Even if we are learning, like sometimes I can receive messages and calls from them. And definitely we all are learning how to make it more better and for more collaboration. In which feel like मैं उस level पे नहीं हूँ, but मौला का शुक्र है कि they are just reaching out to me and giving me that opportunity. So it's a big honor for me. True. No, yeah, very well said. And then Rahim bhai, you know, I know because your son, of course, he's one of our future superstars. Zain. So आपने कभी गाना start वगैरह किया? Because I know this is new for us. I know last I saw one of your video, I think you posted earlier. Yeah, मैं actually I'm raised in Houston, Texas, और मैं Houston Orchestra का almost for 15 years I was part of the Houston Orchestra. Acha, okay. Singing, and Kamal Haji, you know, is the one who leads the Houston Orchestra. तो उनके साथ काफी साल तक काम किया. As a matter of fact, Kamal Haji को पाकिस्तान जानता हूँ. By the way, मैं भी Garden Dakhana से हूँ. But I was very young when I came, so I was 11 when I came to US. So I've been singing for many years, और ज़ेन मुझे देखता है परफॉर्म करते वक्त, तो एक तरह से उसको मोटिवेशन मिलता है, and I'm so proud of him. Mashallah, he is very blessed, and we are very blessed as a family, and just any opportunity we get, we are just very humbled and very बहुत thankful होते हैं हम लोग, और बस प्रे करते हैं कि बस मौला को और ज़ेन को और मौका मिलता रहे, और इंशाल्लाह वो और अपना आगे बढ़ता रहे म्यूजिक में. And obviously Dr. Kareem is instrumental in his success. So but yeah, I've been part of the music industry, like Maula ki Shan ke gaane वगैरह orchestra for many years. So. Yeah, true. So Aslam bhai, before we let you go, I know you are having some issues here. So Aslam bhai, like you are in Karachi, Pakistan, और हम देखते हैं कि माशाल्लाह we see since the pandemic started, so we see a lot of artists from Pakistan as well on internet now, thanks to Facebook, and we lost them. Okay, I think this is the. So, like, Fatima, let me ask you this. I know you are busy with your group.
like Zaid, Jalal, and Fayaz and everyone. So, what else you do besides singing these days? Trying to get popular on your show. Great answer. Wow. Great answer. ये तो मुझे पता है. जलाल भाई आपकी ऑडियंस को तो नहीं पता ना. वो क्या, I know यार. चलो कोई बात नहीं. Fatima, I like to have you as my big fan now. Always. No, I'm busy with songs with my team here in Tanzania with Sur Sangeet, so that's going pretty well. Inshallah, we'll be working on some future projects very soon. Other than that, I've been trying to stay occupied teaching English to little kids. Acha, oh, that's what you do. Okay, nice. So, how's the situation in Tanzania, like about COVID-19? We're all safe. I'll leave it at that. We're safe. We're still taking precautions, but alhamdulillah, we're all okay. It's not as fortunately for us, it's not as intense as it is in other parts of the world. So, on one hand, we feel very lucky, but we're also praying for everyone all around. Yeah, true. Yeah. So, people who doesn't know Fatima, actually, she's from Calgary. Now she moved to Tanzania, and of course, we don't miss you at all. So it's all good. You can stay there. Not to die on. You are coming back? Yes, I am. Actually, when we were discussing about the atmosphere for the song, the first place that came to my mind was actually Banff. Like, I wished I was in Calgary so I could have gone and done my my shoot in Banff. But and then I thought of like a game park in Tanzania, and I thought it would be so nice to be at a game park and have the animals all around me. But then that's by a lion. So I think let me just step away from that and try and do something else. Dr. Kareem knows that I tried to do it by the beach, but it was really windy, really windy. It wasn't possible. I think Dr. Kareem will agree. I tried, I think, 2 or 3 shots at the beach, and my hair was just all over the place. It looked like it was a horror song. So I think it off and somewhere else. But luckily, I think my video turned out really cool because it was actually in the garden at 𝗃𝗶𝘀𝗶. So I feel very connected now. Okay. Closed here, but at the same time, I got to go there and do my shoot and feel close again to my 𝗃𝗶𝘀𝗶. So that was really nice. Nice. And yeah, when you come to Calgary, and of course, like Kareem, you're in Edmonton. So when you come to Calgary, so we have to record 𝗃𝗶𝘀𝗶 with Jalal episode with you guys whenever you come, July or up to Kareem if you come earlier. So you're coming, we can plan it. But next episode of 𝗃𝗶𝘀𝗶 with Jalal will be at 6 o'clock Calgary time, 8 o'clock Eastern, and we'll be live right here on my Facebook from Punjabi National TV. So so it's like this is a National Volunteer Week, as you all know, because we saw that. And all of you are volunteer, from our community, and it's not only our community. We try to help other community as well with your music or with any other way you can. So I'll start with you, Rain Bhai, about the volunteerism. How much important it is in our community and the rest of the community? आपको तो पता है कि मौलाना हाशिम इमाम का भी फरमान हमेशा होता है कि volunteers are the backbone of our community. Yes. So I think अब तो volunteerism ऐसा हो गया कि ये हमारी soul बन गई है. If you don't do volunteerism, if you are not helping somebody, if you're not helping the community, if you're not helping even outreach programs, you feel like you're missing something in your heart. You're missing something in your life. So I think हम सभी किसी ना किसी तरह capacity में करते हैं और बस मौला से यही दुआ करते हैं कि बस मौला हमको अपनी सेवा में रखे. Yes. बस मौला हमको अपनी सेवा में रखे. अपने बच्चों के लिए भी यही दुआ करते हैं कि बस बड़े होके मौला उनको अपनी सेवा में रखे. And I think we get that also because of our parents, right? So our parents have worked, we have seen them work tirelessly, for Jamaat Khanas or doing some voluntary work. And I think it's just, it's a passing on from one generation to the other. And I'm just blessed to, be able to continue volunteerism in any way possible. I know my brother is very involved in volunteerism. So mashallah, we're just blessed as a family too, to be able to have opportunities to serve the Jamaat. True.
Zora, like, yeah, I mean, what do you want to say? Yeah, I will. I agree with Raheem. Like, since I was raised like in Pakistan, Karachi, since my like when I was little, we used to serve in volunteers and Ginan class and reciting Ginan in Jamaat Khana. And then when we moved here, we keep continuing. Me and my husband. I am here in CMT and other voluntary services and ECDC teaching. So what I realized when there was pandemic and we cannot do any other thing, so I was thinking, why not I should use my skills Mola has given me. So I started doing little clips on Facebook, and then people started reaching out to me like, why don't you do the live shows for an hour? And then I started singing. Like, this pandemic year was more like I made more friends and I was more and well known to the people. And then we did some fundraising event like with the other, collaboration with other artists, so which was like another way to serve the Jamaat and Of help course, of someone in course. need. Yeah, true, Yes. true. Karim bhai? Volunteerism is, as Raheem said, it's a backbone of our community. But before I say anything about volunteerism, each one of these artists, including Salima from Kenya and Noshad, and each one of them, to be very honest, I have seen them during the pandemic. They are all rock stars. Yes. The way they do 1 hour show, 2 hour show to entertain Jamaat and especially our seniors, it's heads off to each Yes. one of them. The spirit of giving back. And I would say there are many ways one can volunteer their hours. But I think through music, because it heals heart and soul. Yeah. And these are the people who are healing them through their voice, through their song, entertaining them every single day. I see them. They are live. They are entertaining, Jamaat and others. So really heads off to them. And as Raheem said, I think volunteerism is the heartbeat of our community. And more than our community, if you look at the message of Islam, I think helping others, reaching out to others, I think that is our duty as well, being a Yeah. human, to fulfill this noble cause. Yes, yes, very well said. Thank you, Shamina, and our good friend Shehzad Tobani is watching as well. Malika Hashmani, is that something is that someone from you, Raim bhai? Malika Hashmani? Yeah, gee, this is that's my mother. Oh, and she's watching from? She's watching from Houston. Oh, Houston. Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Very nice. Very nice. So, and Mohammed bhai, I think you are the most one of the most experienced in the group about it's like Joe, what you're doing, with your instrument. So, aapko, it's like what do you want to say about the volunteerism? देखो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ Oh, yes, please. कि घर से मस्जिद दूर हो तो चलो यूं कर लें हाँ, घर से मस्जिद दूर हो तो चलो यूं कर चलो लें यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए क्या वाह 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 जबरदस्त तो टू सर्व ह्यूमैनिटी इज Yes. एवरीथिंग इज एवरीथिंग और हमारी जो कम्युनिटी है वो उसका जो चैनल है ना ऑफ वॉलंटियरिज्म वो यूनिक है दैट मेक्स अस यूनिक आई थिंक ट्रू लेकिन उसमें ये होता है कि देखो मैं अभी जो आदमी अभी कर रहा है ना उसको हो सकता है 30 साल के बाद उसको पता लगे कि क्या उसको भी कितना फायदा हुआ वो करने से ट्रू मैं एग्जैक्टली आपको एग्जांपल देता हूँ देखो मैं आई एंजॉय माय लाइफ एज अ हाँ। म्यूजिशियन वेरी मच ठीक है ना मैं लोग मुझे बोलते नेक्स्ट लाइफ आप कैसे क्या बन के आओगे तो मैं कहता हूँ यार म्यूजिशियन तो बड़ा मुश्किल है पैसे बहुत कम होते हैं यू सैक्रिफाइस यू प्रैक्टिस एंड इट्स अ हार्ड लाइफ म्यूजिशियन लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ आई वांट टू कम बैक एज अ म्यूजिशियन बिकॉज आई तो वो क्यों है क्योंकि जब मैं 13-14 इयर्स का था तब मैंने एज अ वॉलंटियर जॉइंड द गार्डन ऑर्केस्ट्रा फॉर मेनी इयर्स एंड दैट्स व्हाट हैज गिवन मी अ लाइफ इन अ वे Yeah, very well said. When we played for Garden Orchestra, we would the orchestra would get money, and the money would go in donations and all that. And then we do many Jamaati shows. But it sets a trend inside you as a person. And the connection, whether you're in shoe company, pani company, whatever. I used to be in the shoe company, which I loved equally as I was in the orchestra. कोई ना कोई सर्विस करना बहुत अच्छा यूनिक है. It makes you humble, and I think that's what the life should be about. Yeah, that's right. लेकिन ये मोहन भाई जो आपने जो है सितार को क्यों चुना?
सितार को मैंने क्यों चुना, अभी ये लंबी स्टोरी है, लेकिन टाइम है हमारे पास, टाइम है आपके पास? अच्छा, देखिए मैं है ना, मैं पियानो का अभी भी मुझे बहुत पसंद है पियानो, एंड आई स्टिल प्ले दैट। तो ये है कि मैं पियानो स्टडी कर रहा था, जैज पियानो स्टडी कर रहा था वगैरह वगैरह। तो वंस आई हैड एन एनकाउंटर विद द सितार प्लेयर, ऑल्दो मैं पाकिस्तान में रहता था, लेकिन देखो कि क्या होता है, वो एक कहावत की घर की मुर्गी दाल बराबर, जी समझ रहे हैं आप? जी, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब मैं कराची में था तो तबले को, सितार को कोई पूछता ही नहीं था। यस, ठीक। जब मैं इंग्लैंड आया तो सारे जो इंग्लिश है या जो, ओ तबला, ओ माय गॉड दिस इज फैसिनेटिंग, सितार, ओ माय गॉड हाउ डू यू पुल दिस स्ट्रिंग एंड दिस एंड दैट। तो एक आदमी, यू सी योर ओन इंस्ट्रूमेंट इन अ डिफरेंट लाइट, या in a different, like people are wowed by this. And I was fortunate to meet this amazing sitarist called Ustad Nishad Khan, and he came to my college. So I'm studying piano, but he had come to as a visiting lecturer there, and he spent one month with us, and he's one of the best in the world at the moment. Like definitely, he's a disciple, he's a nephew of Ustad Vilayat Khan. So ओह माशाल्लाह, जी जी। तो उनके साथ जो हमने एक महीना we spent, so that inspired me. And then I actually started sitar very late in my life. Actually, sitar I didn't start till very late. But when I played, ऐसा लगा कि I was connected. So before I started playing sitar, I had a dream. But that's what I wanted to tell you. कि मुझे ख्वाब में आया था कि I am learning from some person. And so as a musician, you have musicians का जो ego होता है बहुत ही ज्यादा sensitive होता है. Right. As you would know, and Dr. Kareem is laughing. He knows, yes. He knows exactly. तो वो क्या होता है कि अब ऐसा होता है, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं प्रैक्टिस करने जाता था ना, तो I would put a paper on the window so nobody could see how bad I am. My voice inside me is telling me I'm not good. Everybody else is playing better than me. So वो musician का होता है थोड़ा सा ego इस तरह का. So anyway, so and then you would hear things ना कि भाई लोग कह रहे हैं, oh, I composed this tune in my dream. I'm waking up and I have this gift. अब मैं कह रहा हूँ मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं होता है? I'm not a real musician. You know what's going on? Anyway, these are like, there is a lot of preconception, all these things that you hear. लेकिन एक मुझे ख्वाब आया कि मैं सितार बजा रहा हूँ. First time in my life, I felt that I could play something really well, and it kind of like resonated inside me in my dream. Or it's one of those like flying dreams that when you wake up, you feel you can fly. So I woke up thinking that, oh, I know exactly what I played on the sitar, but I had never learned it. So that was bizarre. 7-8 months later, coincidentally, I found a teacher. क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहता था, वो टीचर मिलते ही बहुत कम होते थे सितार के. And this sitar teacher accepted me, and after a year, I picked up very fast. And one day I was playing, and he was sitting in front of me, and I had this dream running. कि ये तो exactly वही dream था. So that's my answer. Wow, क्या बात है, क्या बात. तो Zora, since the last March, since the pandemic started, तो Zora में क्या changes आई? मेरे में इस साल हमने क्या नया सीखा? मैंने तो सारे बॉलीवुड सॉन्ग सीखे जो मुझे नहीं आते थे. So it was public demand, or I used to sing like mellow song, and I prefer, honestly, my favorite part is singing ghazals, Jagjit Chitra and Noor Jahan, and like Iqbal Bano, like all like famous Nayyar Noor. And when I was like, like they have different flavors, so you have to sing different genres of songs. And then I started picking up of peppy songs and upbeat and Sufi and all up together. So working hard behind, practicing in my media room. Family ko bola, bye, मैं जा रही हूँ practice के लिए. And while like 2 hours you were practicing in the media room, I was collecting all the tracks and getting them ready. So it's a lot of work behind. It's not easy. Like if you are doing virtual seva plus job and then coordinating, it's not easy to sing and get ready for 2-hour show and making all this stuff ready and just leaving your family alone. Like you guys are over there and I'm in my media room and doing that. So it's a like really lot of learning thing. True. And what about you? Like you have Fatima, but besides coming on my show, what else did you do? That was my first point. I was going to say throughout this time,
I think I've been on your show almost 3 times. So Yeah. that's an event for me for 2020, 2021. But other than that, I think I have developed a deeper passion for music now, and I think I have some long-term goals about where I'd like to take this passion, and maybe like everyone's going on virtual programs, but I think it's also pushing me to better myself as a singer, and work on more collabs and have them recorded and store them so that I can share them with my family 10, 15 years down the road. These are beautiful memories, and like Dr. Kareem said, it's been a crazy pandemic for a lot of people, but I Yes. think music has really connected us in amazing ways the last 2 Yes. years. Yeah. I've done collaborations with people all over the world. I've had good music here with my team. It's been amazing, and I think we need to keep that going because that is Yeah. bringing hope to a lot of people around the world. Yeah. And Yeah. I think Yeah. people who don't usually sing are now, getting into that need of, okay, let me try singing and let me better myself and let me practice and let me share some music with people on social media or sending clips to people on WhatsApp. So I think music is spreading a lot of love and hope for everyone. True. 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 What about you, Rainbow? Did you learn any like how to cook or बर्तन धोना वगैरह सिखाया जस्मीन ने? नहीं अभी तक खाने तक नहीं पहुंचा हूं मैं पर इसके अलावा we have little kids as well. We have twins at home, so we have 3 boys, so lots of energy in our home. So we have learned how to be patient first of all. Yeah. We're always home now, but I think one thing ये pandemic का मुझे बोलना था कि first of all prayers for everyone who has suffered in this pandemic, and mashallah us and our community is so blessed that they have kept everybody so connected, well connected, and all these musicians who have come out, all these collaborations that have happened. I mean, even like my son getting so many opportunities, Yeah. meeting Dr. Kareem was because of this pandemic. So I think एक unique opportunity मिली है सबको अपना टैलेंट को भी लाने के लिए बाहर, और बहुत सारे लोग अभी है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने आप को बाहर लाएं. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग. आई थिंक जो डायमंड जुबली से प्रोग्राम शुरू हुआ था, अब now it's kind of building upon itself. I don't even imagine once we have Platinum Jubilee, inshallah, there will be so many new artists coming out, and it will be amazing. So I think pandemic की वजह से a lot of people have started collaborating how to work together remotely, and I think this will continue, whether it's in the technology world. Yes. I'm part of the technological world, so I know a lot of people may not even go back to their offices. They'll start continue to work from home and things like that. So I think this will keep growing, inshallah, and it's all of us trying to keep it going as well. So yeah, that's right. Yeah, and before we go to Kareem, okay, Fatima, I think you have to leave. Thank you so much. अच्छा वापस कब आओगी और बिरयानी कब खिला रही हो? Very soon. Next month आऊंगी. वापस आऊंगी next. Aujo. Thank you. Thank you, Fatima. Thank you. Thank you. Look forward to working with you again, inshallah. Thank you. Inshallah. Bye bye. Bye, sir. Bye. Aloo ka paratha. Okay, Kareem, I'm going to change the question to you because I know this pandemic, as you all know, the smiley, then your smiley sound, and the smiley Facebook is growing as well. And being an artist, being a composer, being a, you can say just in general, kitna changes, kitni changes, it like जो है Kareem में कितनी changes आए, plus in general as a community, because every artist now they have a chance. They can come to my show, Blessing, or they can go to the Diamond Jubilee group, they can post there, you know what I mean? So there are so many avenues now, for the artists. What do you want to say? Bayan, pandemic ने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं. This pandemic has taught a lot, and as I was saying before, this is the curse. So many people are dying even in India today, and our prayers and thoughts are for each one of them, But if you reverse the coin and try to look at the positive side of it, I always see it as we have external world and internal world. This pandemic personally has taught me कि अंदर की दुनिया को तलाश करो. Yeah.
पहले हम बाहर की दुनिया में बहुत खो गए थे, ठीक है। इस पैंडेमिक में एक और चीज सीखने के लिए मिली कि ये सिर्फ पैंडेमिक किसी एक कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन के लिए नहीं है, ये सबके लिए, ठीक है। हम इस पैंडेमिक में क्यों इस्लामिक टेररिस्ट और ये तमाम बातें नहीं सुनते, नहीं आ रही है, that's right. वो तमाम चीजें हो सकता है कि पहले मीडिया ने क्रिएट की हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमें ये देखना है कि हमें कितनी कॉमनैलिटीज हैं, ठीक है ना। हमारे जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो, यूएस में बैठा हो, कनाडा, हम सबके प्रॉब्लम बीइंग अ ह्यूमन सेम है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज हम सबकी सेम है। You know, this is the time of reflection, working together, you know, holding each other's hand and working together and reaching the same goal. तो पर्सनली मेरे लिए ये पैंडेमिक जो है वो एक तरह से एक अंदर की जो किताब है, ठीक है ना, खुद ही में डूब कर ज़र्बे कलीम पैदा कर, हजारों चश्मे तेरे संगे राह से फूटे, खुद ही में डूब कर ज़र्बे कलीम पैदा कर। So I think this is the time of inner reflection, and of course your faith always guide you and has been for centuries. So personally, this pandemic has taught me this. But your next question regarding the Smiley TV and Diamond Jubilee and Coffee with Jalal and all that, I think, you know, the way our community and the people like yourself, Jalal bhai, you know, like we can't thank you enough. You know, you bring so many artists from so many different parts of the world. आपने यूथ के प्रोग्राम कराए, और आज मेरे बेटे को कोई थोड़ा बहुत ड्रम बजाते हुए जानता है तो वो because of you. And same as Zain, and you know, like you have encouraged and so many young artists. So the Smiley TV or Diamond Jubilee or Coffee with Jalal, I think each one of them are unique. And each one of them are trying their best to showcase the talent. Yeah. And also those hidden talents, as Raheem mentioned earlier, कि पहले हमारे पास कुछ गिनती के आर्टिस्ट थे. Yeah. Now we came to know so many stars, you know, rising stars from the community. So I think this is like, you know, Smiley TV has just completed its first year yesterday. Yeah. Okay? And if you look at it, is run by volunteers. Yes. You know, we are celebrating volunteers week as well. So you can't thank enough to each one of these platforms. Either it is you, Coffee with Jalal, or Diamond Jubilee, Suhana Safar, or you have, you know, the Smileys. Each one of them, they are trying their best to showcase talents, and I think they are doing an amazing job with that. Very well said. Very well said. So, you know, like, you know, Mohammed, I'm going to change the question to you. We had a Jubilee Games in 2016. That was the first time we see our Smiley artists around the world. They were, you know, like on a stage. Then we had a Jubilee Arts, Jubilee Music came for the Diamond Jubilee. Then the Portugal celebration, like we see a lot of artists there. Now because of the pandemic, now we even, like, you know, now even more artists are coming up. So being an artist, you are experienced one in the group right now. So आपको कैसा feel होता है to see young artists or new artists and all this program, Jubilee, like, you know, Jubilee Art, Jubilee Music, Jubilee Games. So, you know, now the His Highness brought so many things for us. We can start, you know, building our kids now. Yeah, this is an opportunity कि एक momentum आ गया है. जो कि बहुत टाइम से I have been talking to a lot of people कि भाई क्यों, why isn't there a Smiley festival? Why don't we do like a music or art camp, you know, in the summer? You know, those things I have always, like, you know, advocated for them. But sometimes there's a right time and right place. So शुक्र है कि एक wheel जो है ना वो spin होना शुरू हो गया. Spin हो गया, exactly. Yes. ठीक है ना? Yes, yes, और दूसरा ये है कि देखो, I know people for many years, you know, like क्योंकि हाज़िर इमाम का फरमान था कि आर्ट्स की तरफ, you know how important it is, but उसका फरमान तो आया लेकिन उसका एक्शन इमीडिएट नहीं था. फरमान बहुत पहले आया था लेकिन there was not much happening, but suddenly at least now something is happening and people are taking more into account, especially जैसे डॉक्टर करीम ने कहा कि कोरोना has taught us that, you know, what is essential in our life. Yes.
अपनी फैमिली हो गया, आप अपना जो स्पिरिचुअलिज्म आपका है वो आपके लिए एसेंशियल हो गया, खाना पीना एसेंशियल हो गया। और उसके बाद अब कोरोना ने आपको ये सिखाया कि लोग वर थर्स्टी फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर म्यूजिक कनेक्शन एंड थिंग्स लाइक दैट ना। तो वो उसका बहुत अच्छा है, एक प्लेटफॉर्म है। नाउ वी हैव टू जस्ट बिल्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और माशाल्लाह ये है कि टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा, बहुत मतलब और यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स पे है। ऐसे नहीं कि भाई देखो, हमको हमारा जो फ्रेमवर्क है ना वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, कि बेस, गिटार, कीबोर्ड, सितार, तबला, सारंगी, सैक्स, उससे आगे जाना है। भाई कौन सा एक रेयर इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सेंट्रल एशिया में मिलेगा? बहुत से इस तरह के ऐसे यूनिक आर्टिस्ट हैं, यू नो, तो वो है। और दूसरा जॉनर्स के स्टाइल्स हैं, क्योंकि देखो अभी एक स्माइली है, हमारा गिरान अलग है, who live in अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो हमको ब्रॉडन, जिस तरह हमने उसको ब्रॉडन किया कि we incorporate qasidas and these things, we are bringing all of those things to make the full spectrum of what our culture has to offer. तो उसी तरह म्यूजिक में भी मैं ये होप करता हूँ कि we are going to diversify more and bring people from different platforms. So these are really good things. एक मेरा जो है, you may call it criticism, like honest feedback, not about this song at all, but everything that I've experienced so far, हमेशा यही होता है कि भाई ये सॉन्ग वगैरह करना है, ठीक है, कब? नेक्स्ट वीक। Okay. तो टाइम बहुत शॉर्ट देते हैं लोग, you know, the time. So why cannot somebody decide like 2 months in advance or 3 months in advance that, you know, we have this deadline, so we have a process. तो एंड में ये होता है कि, you know, like it's just like a last minute kind of like, you know, तो वो cramped in होता है। तो that's one thing I hope कि as a structure, as an infrastructure, whoever is doing collaboration or something, you know, उसका एक थोड़ा systematic, उसका ज़्यादा time frame, more realistic. And I'm here if anybody wants to, you know, engage with me. I have experience with a lot of these things, so I will be happy to, you know, be part of it or give my, you know, suggestions or so, basically. Yeah, beautiful. Yeah, यहाँ पे comment आया from Shehzad. Besides all these beautiful, amazing, talented artists, well, I love the new logo there. Yeah, thank you so much, Shehzad. Thanks for noting. Yeah, this is thanks to 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘀 from Houston. I hope you guys like the new logo. Yes, this is the Koffee Jalal new logo. It's designed by Amara Riaz Bhai. How come I'm the only one drinking coffee though? Just pulling your legs. It's Ramzan, that's why, Ahmad Bhai. Oh, a good excuse. I'm bad. I should. So you come back to like, you know, NUR se Roshan. Karim, I'll start with you. You know, again, beautiful like sceneries, beautiful lyrics, beautiful music and everything. So if I ask you, maybe you can say 3 things. I'll ask everyone 3 things about NUR se Roshan, about your experience and the way you like it, video and everything. Kya acha laga? 3 things. First of all, to work with amazing artists and collaborate with them. So much learning, so much improving our own skills. So that would be first, collaboration and working with so many artists. Second, I would say our own personal learning and journey. Being a composer, being a musician, how we can improve further. We wanted to, when we were composing this song, we wanted to have meaning which are more spiritual in nature, rather than, you know, a typical Geet where we have, you know, a different names, Maula. We wanted to have the names which are beyond only one type of genre. And third, I would say, you know, I didn't mention the name of Ali Zain, who were our, you know, the videographer and director of this beautiful video. So hats off to him. You know, he did an amazing job of putting together the video. So I think these are the 3 things I would say. Zora? Yes, I agree with Karim. First of all, learning, like, you know, as I said, shooting that around the nature. That was one of my first learning experience. Like, yes, there is a beauty created by Allah, which is around you. Why don't we express through our videos? And, you know, and it connects with our lyrics of the song. And I like the way Karim was working, because checking on us.
multiple times sending, you know, the voice video, like voice sound, like recording, and like, no, correct this one, this part was missing. And like, I think 7 times in a day. And I was working all day and late night sending to him. And he was telling me, Zara, why don't you record in the morning? And I was like, I'm working. So only weekend I can do recording in the morning. So yeah, like hard work paid off. Like, it's not easy. You have to do multiple attempt to get Yeah. a good Yes. presentation and good result too. Number 3, like, I never knew, as I mentioned, Muhammad Dasani, and I never knew he was so blessed to perform in front of twice Yeah. in front of Maula Bapa, and Yeah. it was great. And yeah, that's all new for me. It's Yeah. everything. Yeah, I'm really Nice. blessed. Nice. Rahim bhai? Yeah, first of all, like I said before, I'm very humbled to be part of the project, and I think अब जब मैं आपके शो पे भी आया हूं तो हमें भी एक चांस मिल रहा है सब musicians को सब musicians को जानने का. As a matter of fact, I also did not know, you know, what kind of talented people I was working with. So first of all, I think that's my first thing. I'm blessed to be working on this song with so many beautiful artists and the talent, and you know, जिस तरह से you know करीम सर ने पहले बोला था कि कैसे different instruments को you know पूरा किया गया है composition में. It's so Yeah. much beautiful than just, you know, playing a piece on a piano or a computer. So Yeah. first of all, that's it. Second, I think Dr. Kareem ने lyrics जो लिखे हैं इनके बहुत ही beautiful है. Mashallah. Yeah. The meaning of the words really touch the soul, right? So जो that's number 2. And I think third thing, जैसे Dr. Kareem और Zara ने भी कहा कि the videography. I think जो जिस तरह I guess मैंने जो चीज फर्स्ट नोटिस की जब मैंने पहली दफा ये वीडियो देखी तो ये था कि लाइक डॉक्टर करीम जैसे कि स्नो माउंटेन में थे और लेक के पीछे खड़ा हुआ था, कोई ऑलमोस्ट लाइक जंगल में था, फातिमा गार्डन में थी. लाइक इट्स लाइक सारा जो नेचर है वो एक साथ ही कैप्चर कर लिया, यू नो. सो डिफरेंट वेदर्स एंड एवरीथिंग. और स्पेशली जो हमारे फ्लूट वाले थे, आई मीन ओ माय गॉड, उनकी वीडियो तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी. पता नहीं वो कहाँ ले रहे थे, लेकिन बहुत ही एक तो रास्ते पे चल के ले रहे थे, फिर बैकग्राउंड बहुत ही. सो आई थिंक वो नेचर का जो सीन था जो क्रिएट हुआ, स्पेशली यू नो नवरोज के टाइम पे हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे, राइट डॉक्टर करीम? सो आई थिंक वो इसका सोलफुलनेस, इसका थीम सब एक साथ बैठ गया विजन के बाद. Yeah, beautiful. Yeah. मोहन भाई, what do you want to say? मैं ये बताऊंगा कि ये डॉक्टर करीम ने इतने प्यार से मतलब मुझसे पूछा, तो मेरे कुछ 4 प्रोजेक्ट चल रहे थे उस वक्त. अच्छा, माशाल्लाह. तो वो सबकी डेडलाइन होती है और they were all paid projects, so you know I have to do them, you know, I can't do that. Yeah. So not that this wasn't important, this was important, but first of all he gave me a deadline. For example, it was like 25th or something. तो मैंने कहा ये नहीं होगा मुझसे, तो I said I'm busy until 10th of next month. So I thought he's gonna say okay, fine, this and that. He came back to me 3-4 times. So I said okay, he's not gonna let me go. I have to do it. But I'm so happy that I did. I'm just being honest. Like I wanted to do it, but लेकिन time का जो problem होता है ना फिर, because I don't believe in doing something just for the sake of doing it. Because the quality or something can go wrong, or you know, like I have to listen to the song. I have to feel justified. Okay, what I'm going to do is going to add. Yeah. You know, if it's not going to add, then I feel like there's no point doing it. No? Yeah. So I have a frank conversation. I liked the piece. I loved the words. Everything was good. Time was a factor. But Kareem Bhai kept accommodating me. I said, look, I can't do it now. I have this problem. I have this problem. He was so kind and so accommodating. And so I'm so glad that he did that. And it was his will. He made me play. Honestly. So credit to him for sure. Yeah. You know what? Last time जो Kareem Bhai आए थे हमारे show पे, it was back in July. And he gave me 24-hour notice. So I was very humble that time. And this time he gave me 1 week notice. I want to come. And the next time I need next time 1 month notice. I think there'll be, at least I know the project is going, so we can plan it bigger and better, inshallah. Yeah. So that's a tip for you, Kareem bhai. Okay, you know, Mohammed, I want to put you on spot here because I know you are one of the blessed person here. When you were gone to Aglimont, आपको 3 चीजें क्या याद है अभी तक? Please, I love to hear. I love stories, this kind of story. एक तो ड्रामा बहुत था. हाँ. क्योंकि
मतलब like in the drama, in the sense, emotions were very heightened. Yes. और उसमें ये था कि you know we ended up with 27 pieces. Wow. So 27 pieces in 15 minutes, how can you do? Yes, yes, yes. 27 pieces were shortlisted. Wow. So basically we are there for many days. I think like 10 से भी ज़्यादा days थे. And every day we are practicing. So we are practicing every day on 27 things. Wow. You know, but at some point we have to shortlist. Na? कि भाई, let's focus on this is the final list. The final list we did not come upon the final list probably 3-4 days before. So the tension that was there, people were going crazy. What's going to happen? This and that. So there was a lot of like actual tension, you know. क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना, आप इमाम के सामने बजाने जा रहे हो. And what do you present? मैं आपको कहूँ कि भाई आप 3 अच्छी चीज इमाम के पास क्या ले जाओगे? तो you're gonna be really, you have to search. तो वहाँ पे a lot of people's personalities I saw change. Within that. क्योंकि you have to go through your process. You know, आपको hope है कि भाई मेरा आवाज है, मैं मौला के सामने गाऊंगा. Your piece is not there now. How do you feel, you know, like so everybody's ego, everybody's desires and all this. It's like a mix of like very strong emotions, excitement. तो वो एक बड़ी एक notable moving thing थी, which is a place where a person can go. You know? and then there are some things like, you know, like there are some people who are like leading, some people are silent leaders within the group, and some तो सबको लेके चलना और ये सब. So that was kind of like and as you know, Hazimam has said कि भाई ये जो इस तरह का जो pluralism और ये जो collaboration है, वो एक easy process नहीं है. of course. Easy नहीं है. लेकिन उसमें एक बहुत wisdom, once you can walk that path, or once we learn to walk that path, because we don't always learn, na? We just do whatever we want to do and this and that. But once we become channel, then there are so many gifts and you know, those things. So एक तो ये चीज थी. दूसरा ये था कि I made some connections with people, like one of the musician. अच्छा ऐसा भी था ना कि कुछ ऐसे musician थे that which would make me cry. उनकी आवाज सुनना और ये सब. So those were some very touching moments. One of them performer was from Afghanistan. He had traveled to France, तो अपने instrument छुपा के निकला था वो, क्योंकि he had to go through some territory where music is not, you know, like was not looked upon as a good thing. So काफी emotional, काफी what an amazing time. Wow. And No, I mean, last memory which I can never forget. कि you know, that is like you know कि आपके you know, in the blueprint or in your DNA because stamp लग जाना. The one thing that I can never forget, that we are all sitting on the stage, these 20 people, and we played for 24 minutes. We were supposed to. I advocated. Let's do it a little bit more. So anyway, eventually it was 24. So we played as a one unit. For 24 minutes, we were like one, all 20 of us. कितना भी हमारा disagreement था या जो नहीं था, जो भी था कुछ था, we came to a place of composure. From that, and I think that, you know, I can never compare. You know, that experience is unique with these 20 people. That in front of Imam, we were all one. For 24 minutes, we played in front of the Imam. So that was like a blueprint on my soul, you know. MashaAllah, क्या बात है. Thank you so much for sharing today, Jamal bhai. Absolute pleasure. So मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अभी, if you don't mind, तो मैं. Yes, I'm about to finish as well. Okay. So I just wanted to ask everyone before we let everyone go. What's the last comment? I'll start with Zora. I have the same question like Fatima. कब बुला रहे हैं आप Coffee with Jalal? Inshallah, July, August, we have all lined up. So inshallah, we'll be calling you very soon. No, it's just a silly one, but I'm really like happy to be a part of the team and being live right now with Coffee with Jalal, and even our kids are performing. So that's my so blessed. That's it. Shukr Mola for everything. Nice. Yeah. Rahim bhai? Last comment, just again, I hope you know, we can, all these artists, beautiful artists, we continue to work together, and you continue to bring us on the show.
Done. As long as Kareem give me more notice. Kareem bhai, what do you want to say? I want to thank each one of them, the artists. I think without them, this project would not have been possible. Very talented artists, and those who were unable to join, Anis Bhai and Naushad Bhai, Salima and Malik, and each one of them, I think Nawaz, they all went out of their way to help us out. Beautiful composition by Aslam. So I think, first of all, thank you very much to each one of them. And second, thank you very much, Jalal bhai. You are doing an amazing job. Keep up the excellent work. The way you always encourage, the way you always support us. It's really amazing. So thank you very much for that. All right, shukar. Thank you so much, yaar. Hey, Mohd bhai. बस मैं यही कहूँगा कि everyone be safe, and I am delighted and honored to know you all, and inshallah may we have more times like this together where we get to connect with each other. Inshallah. And inshallah, guys, again, congratulations on the beautiful music, beautiful video, beautiful lyrics, and beautiful artists, each one of you. Thank you so much. And keep shining, guys. Keep shining. Thank you so much. Thank you so much. See you soon. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Yali Madad. Yali Madad. Thank you, guys. Thank you. Thank you. तो गाइस ये थे नूर से रोशन टीम, करीम गिलानी, जोरा सोहेल, Fatima Manji from Tanzania, and of course Muhammad Hassani, Raheem Hashmani, Aslam from Pakistan, and there are some other artists जो है couldn't join us. So before we let you go, and as you all know, this is जो है National Volunteer Week. So this is one of the beautiful song just released by our good friend जो है 𝗃𝗶𝘀𝗀. So I want to play that song. It's for our. It's dedicated to all the volunteers. So let me play that song. Then I'll say bye bye to you guys. Here we go, guys. 𝗃𝗶𝘀𝗀. We are your volunteers, मौला, तेरे चरणों में रखना हमें, नेकी पर हम चले और बदी से डरे, तेरी सेवा में ही निकले दम. We are your volunteers, मौला, तेरे चरणों में रखना हमें, नेकी पर हम चले और बदी से डरे, तेरी सेवा में ही निकले दम. We are your volunteers, मौला. हमको खिदमत का मौका दिया, हर घड़ी हम करें शुक्रिया. हमको खिदमत का मौका दिया, हर घड़ी हम करें शुक्रिया. तेरी रहमत तले हमको रखना यूं ही, हम पे कृपा तेरी ही रहे. तेरी खिदमत करे हर जन्म, तू ही टालेगा हम सबके हम, नेकी पर हम चले और बदी से डरे, तेरी सेवा में ही निकले दम. We are your volunteers, मौला.
दर्शन के प्यासे मौला, तेरे इश्क में हम हो फना। तेरे दर्शन के प्यासे मौला, तेरे इश्क में हम हो फना। मेरे नूरे अली पंजतन के वली, मेरी बिगड़ी मौला तू बना। किया तूने हम पे ओ करम, दूर सारे हुए अपने हम। नेकी पर हम चले और बदी से डरे, तेरी सेवा में ही निकले दम। We are your volunteers मौला, तेरे चरणों में रखना हमें। नेकी पर हम चले और बदी से डरे, तेरी सेवा में ही निकले दम। We are your volunteers मौला। Beautiful song, yeah. जो है ज़हीर भाई, thank you so much for beautiful song, beautiful music, and I think the जो है इसको लिखा भी आपने। Hello Rabia, thanks for joining us. Gulzar, thank you so much, and everyone else जिन्होंने आज का प्रोग्राम देखा है, सुना है, लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है लेकिन आपने खाली देखा है, so thank you so much, like everyone. Zahir bhai, thank you so much. Yeah, he was watching as well, and yeah, it is on my YouTube channel, and I'll be sharing the link everyone जो है with everyone as well. अगर आपने मिस कर दिया, अगर आप ये शो बाद में देख रहे हैं, so you can go back to my YouTube channel. It is there right now until under the National Volunteer Week. ये जो सॉन्ग का नाम है by Zahir Pardhan. So yeah, अपना congratulations Zahir bhai. And before I let you guys go, there are just a couple of जो कि अपना promos हैं. Just wanna play that as well. There it goes. Our good friend. So guys, आप जो देख रहे हैं, it's जो है one of our sponsor, our good friend, जी हाँ, जो है काशिफ चावला. His number 587-700-9832, 587-700-9832. If you're looking for any auto insurance, house insurance, जो super visa, commercial, home, any kind of insurance, he does everything. Just जो है reach him at 587-700-9832. I do post in जो है Entertainment Canada group as well. If you're watching on Facebook or on the Koffee with Jalal page, so please do like it. If you're watching on YouTube, so please just subscribe my channel as well, so you can get all the videos just first hand, or make sure to click on जो है notification as well. So before we go, just the last one. Subscribe to our official YouTube channel and stay updated. So inshallah मिलेंगे in the next show. Next जो Sunday we're gonna have team Sama. Sama is a like wonderful band, about 5 people from US and Canada. There are artists from 5 artists, and then we have a Roshni Music. Samita Jesadik, she'll join us because she is part of the group as well. And one of another friend, Satich, he will join us as well. And he's a professional. He does a lot of जो है mixing and everything for the Pritam in Bollywood. So he'll join us live as well. So inshallah, you guys will join me as well. And then we're gonna be live on Facebook and YouTube. So one more time. Subscribe to our official YouTube channel and stay updated. तो मिलेंगे अगले हफ्ते. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. We are still in pandemic. Do your best. Don't have to go outside, so then don't go. Do not call anyone inside from outside people to your home, and use a mask. Stay 2 meters apart. This is so important right now. We have to beat this third wave
it's very critical, very dangerous, especially our brothers sisters in India. So do your best, and the people who are suffering, like in Pakistan, India, we are praying for you so you can get back, like all of us can get back to our normal life. And there is a comment from Dr. Karim Gilan. Thank you so much, Jalal. Thank you so much, Baijan. And another comment from 𝗃𝗶𝘀𝗶𝘁 for the best. There you go. Perfect. So we'll see you next time. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Love you all. खुदा हाफिज़. सत श्री अकाल, आदाब, and ya Ali Madad and Salam Alaikum.